Hello, yeah. Hello everyone. Welcome to day 2 of JavaScript. My name is Hans Zakiraman, JDSC lead of AIKDC, and today we are going to learn about like all JavaScript concept. So before knowing before starting to code in JavaScript, let's see what JavaScript is and like its origin. Like let's go back to history. So JavaScript was built in 1996 by Burdine H. And you know what? It is the only one language that was created within 10 days. Like Burdine H, he just created this language. The JavaScript was his personal project, so he created the whole JavaScript concept within 10 days. And it was, previously it was designed for a client side. It was only designed for client side, but now it is both client side and server side. And we will not go on the server side yet. Like it's a huge concept. Now we will just stick onto client side for the basic. And unlike Python, unlike Python, C, C++, or Java, our JavaScript is function-based programming. What function-based programming is? Function-based programming is that everything here is function. Like object is created using function. You can write normal function. You can write function inside function. You can create object using function. Like everything over here is a function. So JavaScript is an only language. Like I think it is up till now it's only language that is function-based programming. And second thing, unlike other languages like Python or Java, JavaScript is already installed in your every browser. Let it be your mobile or your laptop, your desktop, everything. It's everything over there is inside the web browser. And if you don't know what function is, like many of you are like beginners, so don't worry, you will get to know what functional is. Okay. So yeah, moving on to the next slide. So now the question is that where to write JavaScript? If it is already installed in our web browser, where to write it? So the answer is you need to write it inside your HTML file. Your HTML file, which Hamza Beg taught you at yesterday, you need to write your JavaScript code over there. And to write JavaScript, there are two methods. First is embedded, second is external. We will first see what embedded is. Okay, so in embedded, what you write is that you write the all the coding part, like all the backend part, you write inside a script tag. Like you know what tags are. So you write all the programming inside a script tag. And unlike CSS, like yesterday, Hamza told you that we can write style tag only inside the head tag. Yes, or the link tag can be only placed inside the head tag. But for JavaScript, the script tag can be either at the last of the head tag, or it can be in the ending or body tag. So like a script tag can be written everywhere. And usually it is preferred that you need to write the script tag at the last of the body tag. It is usually preferred. अब ये क्यों कि कार को last में लिखने का? The reason is whenever your browser loads your web page, it's go like line by line जाता है वो. So if you write any script, so the compiler, like your web browser has compiler, or what do you say? Yeah, it has an inbuilt interpreter or JavaScript. So it takes some time to interpret your code. So अभी imagine करो ना, अगर एक काम जल्दी होता है, एक काम लेट होता है, तो एवरीबडी प्रिफर कि जो काम जल्दी होता है वो पहले करे और जो भारी काम है लास्ट में करे. सो सिमिलरली इट इज usually prefer to add script tag last, so that first your web page is loaded, all the rendering part is done, and then your JavaScript is loaded. Okay, this is all about internally embedded. And second is external tag. In this method, all the backend code is written in different files. Like yesterday, how you wrote CSS file in .css, right? In same way, you need to add all your JavaScript inside .js function. Okay, and similarly, you use script tag to link the JS file. But अब कैसे? Like script tag में तो हम लोग अंदर कोड लिखते, जैसे कि कल बताया था हम जाने कि अगर जो भी टैग के पास स्टार्टिंग टैग होता है और एंडिंग टैग होता है, उसके बीच में कंटेंट डालते. Script tag has both starting tag and end tag. So how can we link it using script tag? So script tag has an attribute called source, src. It's similar to your image tag. In how in image tag we used to write src. Similarly, in our script tag we also have src. So you link or you write your JavaScript file name inside the CSS or inside the src file. Okay, is it clear? Like जितना भी तक सिखाया है, it's all theory now. Right now it's all theory. And Daroni, unlike Hamza, इतना भी PPT है.
ज़्यादा PPT नहीं लेता है. Any doubt up till now? Any doubt? Any single doubt? Yes, no, maybe. No. That's good. Okay. So yeah. So let's start coding. So now let me open my browser, my VS Code, and let me first of all let me create a new folder. Oh, this is my webcam. Okay, so let me create a new folder. New um, PS workshop. PS workshop. Enter. And you can directly open it. I'm just using my preferred method. Like this is my how I used to do. तुम लोग है ना डायरेक्टली यूएस फोर से खोलो ठीक है. ये मेरे को ज़्यादा easy लगता है. Okay, so yeah, our JavaScript. Yes, मेरा ही code है. Yes, I trust it. Yeah, so let me. So जैसा कि मैंने कहा था, you need to write your JavaScript file inside your HTML. Like you require your HTML file to render JavaScript. So let me create index or HTML file. Index.html. Okay, and it's creating. Yeah. Okay, and I think Hamza didn't told you yesterday. There is also one similar, shortcut to create boilerplate. Instead of writing this HTML file, what you can do is that exclamatory mark and enter. Boilerplate will be, it's like it's kind of fast, like exclamatory mark and then enter. Okay, so yeah, and then we need to open this over here. इसको आधा करते हैं, इसको आधा करते हैं, and create new file and go live. अब सब लोग ने अभी तक बना लिया ना. I'm really sorry. Excuse me, you're on mute. Yes. I'm really sorry. मैं गलती से वो अपना PPT मीडियम लगाया. I'm really sorry. Okay. So yeah, So now let me. Yeah. Okay. So let's write our script tag. So whatever we will be doing now, whatever JavaScript part we'll be doing first. We will see internally embedded style, like how we used to how can you write JavaScript inside the internally embedded, and then we will just create a different file for index.js, and then I will show you how to link both. So yeah. So first of all, now you guys might be thinking, if it is already installed in our web browser, where do I see the output of my script tag? Because output of my JavaScript. So for that, Presentation, please. oh, okay. You haven't shared the screen. Oh my god. I really need an assistant. Yeah. Okay. Am I visible to both the meet? Am I best? देख रहा हूँ ना दोनों में? Yes. Yeah. So, okay, I'm really sorry for the inconvenience, really sorry. So now you guys might be thinking that if JavaScript is already installed in our web browser, where to see the output? So for that, you need to go in your inspect element, go in your inspect. So yeah, this is. Now, currently we don't need this. Like we don't need to see what we are writing. Like we don't need to see any HTML part. We need to see this console part. Or did it message something? Okay, so whatever output of the JavaScript, it will be shown over here in your console part.
So how you can go? You can go inside. At the bottom first. Usually तुम लोग का है ना ऐसा दिखेगा कुछ. Okay, just leave it. Just go find console. It's somewhere inside bottom of your inspire element. Okay. So now first of all, in every coding part there is a ritual. Every first code is what hello world. So to print any kind of message or any kind of text, you need what you need to write console dot log. Okay, to print anything on the screen or like to give any kind of output, the code is console.log. अभी ये ना पूछना console.log क्या है? It's the JavaScript print function. Okay, so console.log and then hello world. So you can see that hello world over here is been printed. Let me just zoom in. नहीं ये zoom नहीं होगा. This part doesn't get zoom. Okay, so here you can see that hello world is shown over here. So console log is used to print anything. Okay, so like if I say console dot log hello everyone, you can see that again the web browser run my code. First it print the hello world and then it print you hello world. Hello everyone. Okay, so there's a typo. Yeah, so that's how you print everything on your web browser console. Or similarly, you can just do your mathematics also over here, like console.log 1 plus 1. Answer is 2. So it will print 2 over here. You can see. Similarly, I can do any kind of math inside console.log. Like for example, gibberish plus gibberish into 89. So it will just compile it and it will give me the answer. So that's how you tell your compiler to JavaScript to print anything. Okay, so this was about like printing function. Like it's ज़्यादा कुछ नहीं है. That's how you print anything on your JavaScript console. Now the second thing that is the most important thing in JavaScript is variable. Now what variable is? If you are like from science, like if you know maths, how in algebra we used to write x is equal to 2, x is equal to 3, y equal to 3. So what we are doing, we just tell that this 2, like x equal to 3 means what? That this 2 is related to x. Like we have stored that 2 inside a variable. Like we have stored it somewhere na. Like अगर मैं बोलूँगा कि तुम कहाँ रहते हो, so you live in Sakinaka, you live in Kharkov, so मतलब it's like you it's stored somewhere. So variable are nothing but it is used to store store value inside it. And like in normal word variables are used to store any kind of material, any kind of data inside it. So in the JavaScript there are three types of there are three ways, or what you say, there are three ways to initialize a variable. First one is the classical style, that is var a equal to like this is var a. Var mean variable. Like you're telling that a is a variable. Okay, so var equal to 2. Okay, so this is one method in JavaScript you can initialize a variable. The second is let b equal to 2, and the third is constant. Let me just write, then I will explain you what those are. So var let const. Var is a classical style of initializing variable. Let is a new style that is introduced in ES6. ES6, yeah, ES6. ES6 you can just Google it about what ES6 is. And const means constant. Meaning whatever you have initialized it once, you cannot change its value again in the future. Like for example, I can, like if I just console it and console.log a and then let me copy it and b and then c. So you can see that here that the value of that variable is printed. Like whenever you print a variable, that value that is stored inside the variable will be printed out. Okay, so like here you can see that a is equal to 2, so 2 has been printed. B equal to 2, then 2 is printed. C equal to 3, then 3 is printed. If I change value of a equal to 5, 4, then the value over here will also change it. Like a equal to 4. Someone comment something. Yes, and so we will just come to your doubt once. No, I just teach you basic of what all this is. Okay,
So now what the difference between let and const and variable is? The variable is kind of, outdated cell. Nobody use it nowadays. Nowadays people use let and const. So let, whenever you initialize a variable with let now, you can change its value in future. Like for example, if now अभी मेरा मन है कि मैं b is equal to 2. Now in future अगर मेरा मन किया कि मैं ना I want to change the value of b equal to 5, then I can change the value of b equal to 5. And if I again then print it now, you can see that first the value of b was 2, and then the value of b become 5. So whenever a variable is initialized using let or what, you can change its value. But whenever you initialize a variable using const, that is constant, then you cannot change its value. Like if I try to change a c is okay, um, c is equal to 5, and then I so see जैसे मैंने c equal to 5 किया, you can see that it gave me an error, uncaught type error, assignment to const variable, meaning what, that you cannot change the value of this c variable. It has been initialized once, then you cannot, like anytime in the future you cannot change the value of c. C is 3, then it is equal to 3. So like how our pi value is 3.14, that is a constant value, you doesn't change that value, right? So that's how, like pi equal to, like root of 3 value is constant, root of 2 is constant. So that's all a constant value. And there are some kind of syntax of giving a name of variable. Like you can, the variable name, you can give variable name with capital, like capital letters, small letters, you can give any symbol, but you cannot, you can also write number to give the name, but you can never, like, but you can know what, never start the variable name with number. Like if I say let is equal to, if I say let is equal to 1, so it will give me error. So you can see that over here. If let me just zoom my, so over here you can see that it give me error. Variable declaration not allowed at this location. Meaning what? You cannot start your name of variable with any letters. You can start with alphabet. Like if I say name, if name one, this is valid. But one name, this is not valid. It is invalid. Okay. And similarly, I can also give at the rate AME, at the rate are also invalid. Only you can start your variable name with either capital alphabet or small alphabet. Then you can just type any kind of any kind of special letters. The special letters maybe at the rate means special letters, and you can type any number. You can type multiply. Yeah. So yeah, so that's how you name your variable. So there is convention. Then whenever you start your naming a variable, you need to start it with a alphabet. Okay. So yeah, and also if you are like kind of lazy like me, so there's also another method of initializing a variable. Instead of writing this word, lat, or const, you can just directly write b is equal to 3. You can just directly write b equal to 3, and your variable is initialized. And if I just print it um, console dot log b, it will give me the value of b. You can see, like, let me just make it 1 2 3 1. So yeah, you can see it gave me the value of b. Okay, so this was all about variable. Now if you have any question regarding whatever I have teach you now, you can ask me. Anybody have any question? Yes, ask. Hello. Any yes or no? Do you have any doubt of about variables? Okay, so good. Let's good. Okay, so now we have learned about variables, like how to initialize variable. Now we will some, okay, so yeah, so this was all about variable. Let me just give a comment. Printing print print code, give you print code and initialization variable initialization without ampersand, without ampersand. That's again. Yeah. So this was all about
initializing a variable. Now we will move on to the third concept, that is data type. About data type is, in programming everything like whatever value you specify ना जो भी तुम value लिखते हो, everything is data type. Like numbers, like how we tell 1 2 3 4 are number, 1.2 1.3 1.5 are decimal, a b c d are alphabet. So this all, like, for our convenience we have given them some name, like we have given them numbers, decimal numbers, alphabet. Similarly, in programming, each and every variable, like each and every data, like this is 4, 2, and then hello world, everything over here is data. So there is, like, so what 4, 2, and 3 are called? They are called integer. They are called integer data type. Data type is like type of the data now. Like yeah, 4, 3, 5, 3, hello world. This all are data. What's the type of this? It's integer. So it is integer data type. So your 1 1 2 3 till infinity are your integer. So like this all are integer. We call them integer. And all your alphabet like a b c d e f g are called character. And when you club this character, like hello world, hello Zaki, how are you, so this all like group of words are called string. Like uh, like this hello Zaki, this all are called as strings. What they are called? They are called as strings. Just a minute. Just a minute. Okay, so this all so like every words are called as string. Um, yeah, so everything over here are called as string. So like hello Zaki, like group of words are called as string. So like hello, hello world, hello everyone. This all are called as string. And the your decimal number like 1.2, then 1.3, then 1.5. This all are called as float data type. Float data type. Okay, so once again, your letter from 1 2 3 4 5 6. This all are called as integer. Your normal alphabet are called as string, whereas all your like point data type are called as float data type. Okay, and yeah, so this is all about data type. So like for example, if I say let no, no let me just comment it out, or else it will give me an error. So let a is equal to 1. So what is the data type of a? So whenever you give variable a data, so the data type is initialized or variable. Like अगर मैं बोलूँगा कि you are like I am lead, so मैं like lead data है और वेरिएबल में हूँ, so मुझे मुझे डेटा दिया गया, so मेरा तो जो डेटा टाइप रहेगा वो डेटा टाइप रहेगा वेरिएबल का. Okay, so if I just say that let a is equal to 1, then a is integer, not 1. Okay, 1 is data. 1 जो है 1 data है. A is integer data type. Okay, so if I just print console, and to check the data type of any variable, you just type type of, and then you just give a. So let it initialize once again. Yeah. So here you can see that it gave me number. अभी JavaScript में integer वाला number बोलते हैं, but it's called integer data type. So here you can see that it gave me a. If I change it to any kind of string like hello Zaki, so it will give me string. See, and yeah guys, to give any to write string, you need to put it under double quotes. Okay, double quotes or single quotes, like yes, let b is equal to double single quote hello. Hello Zaki. You cannot write like this. C is equal to hello Zaki. No, it is not very. It is not. It is like ये ऐसा नहीं होता ये. It's not allowed. Okay. To write any string, you need to write it inside quotes. Okay. You need to write it inside the quote. And the third data type is float. Okay. Float. Like if I say let b is equal to 1.0254 blah 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 blah. And now if I print it, to print the type of it, you will see it will give me not a number.
Oh yeah, so it is giving me same number, but it is float data type. It's a float integer. Okay, so um, normal letters are called as integer. Any alphabet is called string, and any point type 1.2, 1.3, 1.5, this all are called as float data. So these are three basic data types. There is fourth one that is called Boolean. Boolean means what? Either true or false. True and false. These both are called as Boolean, like true and false. That's all. So if I say and how to initialize the variable with boolean. Up now you might be thinking that what is the use of boolean. So the use of boolean is used to for comparing purpose. If you want to write a program that tell me whether the data that is input by user is like if a is greater than b, so how the programmer, like how you will check it. So you will your code, you will write a code that will say like if a is greater than b, then tell me yes, or else tell me no. So how you do that? That is done using boolean. So if a is equal to, if a is greater than b, then your code, then your code will give you true, or else it will give you false. So like true and false, these are called as boolean value. How you initialize boolean value? You initialize using like jo hai wo hai, like how you write like it like this, true. So if I like true, you can see it give me data type of boolean. And similarly, if I write false, then it gives me data type of boolean. So true and false are two data type. Like these two are only boolean data type. Like how in our integer, like 1 to infinity, in string a to z, then capital A to z, and then like yeah, and how in your float data type from 1.2 to 1 point infinity. But in boolean data type, there's only two, true or false. Okay, so did you understand it? That like yeah, I know it's kind of was ज़्यादा to consume, but did you understand? Yes, we did. I'm sure everyone who are new to this programming world, I know it is kind of like कुछ ज़्यादा consume करने को है. Yeah, Mohammed Khan, you raise your hand. Yes, that's good. Okay, so this was about data type. So yeah, so this four are like your basic data type. Now we will move on to something big. Now, for example, now let me say that if you want to, like for example, let's say that you need to take more than one data. Like you like for example, if I tell you that come on Aryan, write me a program that takes input like for example, if I say Aryan to write a program that stores 1,000 data. Like if I told him to write a program that stores 1,000 data. Now, what Iron can do is that Iron can either just like idiot can say let a equal to 1, b equal to 2, c equal to 3, and then he can initialize 1,000 variable. Or else what we can say is that he can initialize a list or array. So now what array is? Array are nothing but they are group collection of any data type. Like for example, if I say like how let me for that let me open my OneNote. Over there you can understand much better what is list. Okay. And figure not my laptop is touch screen, so if you see like तो मैं सर आगे रहूँगा क्योंकि मेरा पीसी स्क्रीन आगे है. Let me hide it. Hmm. Yeah. So up till now, how integer was in integer you used to write a is equal to 2. So what was doing you that you just initialize one data inside a variable. Let's see, this is your variable. Okay. And sorry, I don't have any stencil. I'm using my finger. So typing, so like screen writing would be very bad. Okay. I don't have any stencil with me. Okay. So like I have. Let me see. Yeah, it works. Now my finger is better. So. नॉर्मल वेरिएबल में क्या होता है लाइक इंटीजर डेटा टाइप एंड बूलियन एंड स्ट्रिंग व्हाट यू डू you just give one data inside it. But what is list? List is a collection of data. So how this container is small, like इसका ना एक ही चीज आती है, इसका ना A आती है, but in list there are multiple container inside it. Like yeah, for who are new to this word programming, I know those who know what list is, they might be
getting trigger कि ये कंटेनर क्या बोल रहा है, but for those I know, but जो लोग नए हैं ना उन लोगों को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि it's container. Okay, so what you used to do that in list you used to not give a one data, you used to give many data at a time. Like एक साथ चीज खिलाते, like अभी अभी हम क्या कहते हैं, अभी हमने एक एक नंबर खिलाए थे, अभी हमने सीधा प्लेट मूव मार दिया हम लोग ने. सो इसके अंदर कैसा था, हम लोग हर एक चीज हर डेटा है ना एक ही स्टोर करता है. यहाँ पे मैंने ए स्टोर किया, बी सी डी ई एफ एंड कंटिन्यू कंटिन्यू होता रहता है. सो नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट ओके ज़की तुमने बता तो दिया कि एक साथ डेटा क्लब होता है. व्हाट इफ आई वांट ओनली डी? लाइक okay, let's come to code. Let's come to code. I will first show you how to initialize a list or array. Okay, so to initialize list or array, let's say let ls is, so up till now how you used to write false or one or inside the code hello Zaki. To initialize a list you only need what square bracket. जैसे तुम स्क्वायर ब्रैकेट दबाओगे your VS Code will give you closing and ending square bracket, and whatever we write and the data data is stored inside this list, like how 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7, and I can just go on. I can literally go on, like मैं कितना में जा सकता हूँ. अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक एट अ टाइम एक ही डेटा आ रहा था, but now you can see at a time कितना है, ये पता नहीं कितना है, मैं काउंट भी नहीं किया, मैं मार गया. So let's first of all let's print it. So console dot log ls. So see इसके अंदर in this list it contains 50 data, and see how सारे साथ आ गए, है ना. So this is list. List is nothing but collection. Array is nothing but collection of data type. And also what I can do is that I can even type string inside it, like integer and then string. And also I can initialize my Boolean value inside it. I can also initialize my this what is called float inside it. See, you can see. So how, like now we used to initialize one thing like a b c d. ls contain more data than a b c d. Okay, so this is what is list. Like list is nothing but collection of data. इतना समझना, like सबको समझना है कि what is list is nothing but collection of data. Like एक साथ बहुत सारा data. ना? Yeah, that's better. क्योंकि yeah, good. Okay. So now अभी हमने लिस्ट इनिशियलाइज कर लिया, हमने डेटा भी डाल दिया. Now what if I want to print only this my string ASD. अभी मुझे बस मेरे को है ना मेरी अभी जो how we get a group of data, I want only one data. I want to print this two. So to print anything, so what is inside our list is that there is something called indexing. Indexing means what? Each and every data is given a number, and the numbers start from 0. So the first data that is stored, like in this list in the screen, there is A, B, C, D, E, F, meaning that there are 6 data inside my list, and each data is given an index. And indexing start from 0. So A is given 0. A is given 0, B is given 1, C is given 2, D 3, E 4, and F 5. So the indexing of variables start from 0 and it continue on. So if the length of my list is 6, then the index of my last variable would be length of list minus 1. So like how the length of this list is 6 and the index of last variable is 5. So like 6 minus 1 is equal to 5. Okay, so yeah, so if I want to just print C, so what I will add? I will add console.log. What I will add? Okay, so let's come inside of a code. Code से ना अच्छा रहता है. हाँ नहीं. So what if I want to print this 4? So यहाँ कैसे आ जाएगा? यहाँ पे let me just zoom in more. बहुत अच्छा दिखे. Yeah, and let me call this thing because so what if now I want to print 4? So how I will add console.log ls, and to print any data now what you need,
you need to write the index of that number, index of the data inside square bracket. So like how? So let's count the index. So one has zero index, two has one index. three. So yeah, you will add 3. Very good. So if I write ls, if ls square bracket 3, it will print me 4. देखा कैसा मैंने 4 प्रिंट हुआ. लाइक अगर मुझे 4 प्रिंट करना है तो मैंने 3 डाला. लाइक अभी तुम लोग बहुत से कंफ्यूज है कि भाई 3 डाल फिर आना चाहिए. नहीं, अगर मैं इसको ऐसे मैं इसको कर दिया 11, इसको कर दिया 21, फिर 31, 14, 15 और 16. तो अगर अगर मैं अभी 3 डालूंगा तो 3 इंडेक्स इंडेक्स कैसे ये 0, 1, 2 एंड 3. 3 में क्या, 3 में 14 है. तो मैं दिखाना. So see, so 0, 1, 2, 3. 3 में क्या है, 3 में 14 है. यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 14 प्रिंट हुआ. Similarly, if I just tell it 4 डाला, so in 4 it will print me 15. If I write 0, it will give me my first element, that is list, that is 11. So if you want to print first element, you write 0, and if you want to print the last element, you write the length of your list minus 1. And now you might be thinking that now let's say for example I have given you a list of unknown variable. Okay, I have given you a list of unknown variable. Like, you don't know what is the length of your list. Like let's say it is 1,022 crore blah 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 blah. Now you might be Lou is a better counting okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 to get the last element. You need a fast and easy solution, right? So in list there is a method. A method क्या, you will get to know about it more in future. Now let's just say there is a method. Yeah, so there is a method called length. So now if I want to print the length of my list now, if I print the length of my list, I will write ls dot and then length. So what this will do? This will give me the whole length of my array. Now you might be telling me that Zaki यहाँ पहले से दे रहा था मुझे, यहाँ पे मुझे पहले 6 दे रहा था. अब तुम हमेशा थोड़ी कंसोल डॉट लॉग करते हो. फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट क्लाइंट तुम्हारे सर्वर बैठा बोल रहा है कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, एंड तुम्हारे पास मिलियन ऑफ लिस्ट है, बहुत सारी लिस्ट है, लाइक बहुत सारे वेरिएबल है, लाइक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लिस्ट लिस्ट. अब तुम लोग एरे से बैठ के सब ऐसे कंसोल डॉट लॉग ए, और देन अगर तुम्हें लिस्ट अगर तुम्हें लेंथ लिखना भी होगा, यू नीड एनी पेपर, तुम लिखोगे हाँ ए की लेंथ 5 है, बी की लेंथ 15 है, सी की लेंथ, ऐसा तो होगा नहीं. यू नीड अ फास्ट सॉल्यूशन. तो उसके लिए है ls डॉट लेंथ. तो जैसे मैं मारा ls dot length, I get the list, I get the length of the array. So now if I want to print the last element, मैं क्या करूँगा? I will say ls, okay, ls dot length minus 1. So you can also do mathematical operation inside the square bracket. Okay, so like for example अगर मैं यहाँ पे डाला क्या 0 plus 1 into 4, तो ये क्या करेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 0 plus 1 5, 5 into 4 20. So since नहीं यहाँ से हाँ 1 plus 4 1 into 4 4 हुआ, 0 plus 4 क्या हुआ 4. तो ये मुझे क्या देगा, 14 एलिमेंट देगा. Okay, so like 0 1 2 3 and 4. So 4 क्या है, 4 एलिमेंट क्या है, 4th एलिमेंट 15. Okay, and similarly मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ls dot length minus 1. So this will give me my last element and 16. Now what if now you might be thinking that what if I just print ls dot length? In syntax like there are only 0 1 2 3 4 5. There is not 6 is not there. So so it will give me undefined. Undefined meaning what? There is nothing at ls of 6. And if you do the same mistake in another language, like if you did the same mistake in Python or in Java, it will just directly give you error that length of this is smaller than like index. It will give you Length index. exceeded. Yeah, length exceed error. But inside JavaScript, they are not like jaldi error data nahi. That's what cool thing about JavaScript is. That's why JavaScript is in top 1 languages. Top 2 में पाँच आता है. And yeah, so this is all about lists. So these are 4 data types: integer, string, float, boolean. These are 4 your normal data type, and then you have array that consists of all the collection of your data. इतना समझ सबको. Whether you want to say something, your mic is on. Want to say something? Fazil?
How to get the length? To get the length, you need to write ls dot length. Ls dot length. So yeah, like ls and then dot length. ls is a name. Ls is a list name of my variable, and that contain list, and then dot length. ls and then dot length. I think that clear your dot was it. The messages. Yep. Okay, so yeah, so now moving on. Now we will go to basic arithmetic progression like plus minus. Now we will do something. Now you might be thinking that अगर मैंने बताया that now I have taught you how to initialize variable, but what is the use of variable? Now for example, let's say that I give you a program that has kind of I tell you program, okay Fazil, write a program that adds two number. So what you can do, you can just that is like console dot log 1 plus 2. Like I told Fasil, write a program that show me the addition of 1 plus 2. So he can just write console dollar 1 plus 2. But now what if I say that Fasil write a program that add two number, then multiply it, then divide it, then again add it, like blah 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 blah. So what he will do then 1 plus 2, then into 1, then into 2, like as like he will like constantly like 2, then plus 1 2 1 3, like no, it's kind of very hard to write. So what if I told you that you can, what you can do, just for, and what a normal person will do, he will just initialize a variable. He will just say let a is equal to 1, and then he will say let b is equal to 2. And what he will do, he will just write all the thing like वापस लिखना पड़ेगा like a plus b, then into b, then plus a minus b plus minus b, ला ला ला. So अब ना तुम लोग बोले कि भाई तू वही सेम हरकत कर रहा है. लाइक अब व्हाट इफ मैंने बोला ठीक है तूने वन वन अभी तूने 1 और 2 का किया था, अब मुझे 1 और 2 का हटा के 3 और 5 का कर. तो ऑब्वियसली का एडो से बैठ के जहाँ 1 1 लिखा था वहाँ 3 करोगे, जहाँ 2 2 लिखा था वहाँ 5 करोगे नहीं ना. तो उसके लिए क्या करो, डायरेक्टली क्या करो, जहाँ 1 है वहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 2 है वहाँ 5 लिख दो. सिंपल, पूरा तुम्हारा जो है कोड चेंज हो गया. लाइक ऐसा क्या कहते हैं 1 plus 2 then into 2 then plus 1 then minus 2 then minus 1. So that's how you can just use variable. और variable usually हर जगह यूज होता है. Bro, please enable your console screen. I can't see that. Okay, unpart A is already defined. And yeah, one thing I forgot to tell, once you initialize variable now, once you initialize a variable, you cannot reinitialize it. Like you can see that over here in line 33, I have initialized A has string. And you cannot again initialize A has string. But you can change the value of A. I can change the value of A is equal to 3. So what here? Here A has data of hello Zaki. But here it is changed into 3. But the variable is initialized only once. Like A has initialized only one. Like A एक बार पैदा हुआ, उसको हमने पहले hello Zaki बोला, तो उसके बाद हमने उसको 3 का. Like तुम ऐसे नहीं कह सकते कि तुम A को एक बार initialize किया, तुम उसको वापस initialize करो. That's not allowed. So like again, it's telling me that identifier B has already been declared. Like here B has already declared. I cannot redeclare it. I can change the value of B. I can change the value of B. Let's see, code चल रहा है मेरा. So that's how you use variable. You can use variable in all kind of projects. Okay, so this for all about arithmetic. And yeah, one thing that I want to teach in arithmetic was there is like they are order of how every programming in every programming the what is called I cannot arithmetic operator. Like there are privilege of all arithmetic operator. On top there is division and multiplication, and then at lower this plus and minus. So whenever you will write in a console dot log, okay, if I write 1 plus 2 into 0, so the answer would be 1. Why? Because first it will add 2, it will multiply 2 into 0, answer is 0, and then it will add with 1. What's like 1 plus 2, 3, and then 3 into 0 now? First it will perform your multiplication, then it will perform your plus. But what if I say that A
Now, what if I write a plus b inside a bracket? If I wrote it inside a bracket, then the output will be 0. Why? Because bracket has more privileges than your multiplication and division. So whenever you write arithmetic operation, so पहले bracket, first the thing that are inside a bracket are solved, then your multiplication and division are solved, and then your addition and subtraction is performed. So if I write like 1 plus 2 into 0 and then plus 1 then plus 2, answer would be still 3. So why 3? Because 1 plus 2 3 0 हो गया. 1 plus 2 3, 3 into 0 0, and then 0 plus 1 1, 1 plus 2 3. So as was that. Okay, I think someone again told something message. One message again. Board mass. Yeah, board mass. Yeah, board mass. That's the board mass are correct. Okay, so this is what about arithmetic. Now let's move on to the third thing, data. Like I have just wrote in notepad about to teach you. Yeah, so data types हो गया. So you can see that we have initialized variable. We saw all the data type, that is integer, string, float, boolean value, and array list. Okay, and then we also saw how you can get the length of the list and how you can access the data inside the list. We then also saw about how what is the user variable, like क्या है user variable. So the user variable is that it store data and you can manipulate its data and you can use it everywhere. Like instead of writing it again and again like an idiot, you can just initialize. You can like it's ऐसा नहीं कि उसे एक बार store कर लिया कि जब भी use है निकाला और वापस adjust. So that is the variable. Then we saw about arithmetic progression in arithmetic operation. First what the equation that is first written inside the bracket is solved. Then your multiplication is solved, and then division, and then your addition and subtraction. So up till now, do you have any doubt in this? Like up till now, form printing, like from console.log up till here, do you have any doubt? You can ask me. No. I'm seeing that only Janvi, Javed, Yash, Chinmay, and yeah, then Nevkash and Aman, like Rahil, and this all guys are just again these are only one who active. I want an answer from everyone. सब active हो यार, दो चार लोग नहीं अच्छा लगता मैं. Let's make an interactive session. I'm not acting like our professor. I'm not acting like my professor. Okay. Yeah. So I think that's good. And over here, do you have any doubt? Like meeting people in meeting, do you have any doubt? Like I cannot see everyone over here because meeting two guys. Do you have any doubt? I think they don't have any doubt. Okay. So let's move on. So now you have see about this all thing. Now what we will do? Now we will move on to the conditioning. अब what is conditioning? Conditioning is like जब तुम लोग अपना करियर चूज करे थे तो वहाँ भी तुम्हारे पास ऑप्शन थे या तो इंजीनियरिंग लो या तो फिर मेडिकल लाइक आई गेस मेनी ऑफ अस आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम so after completing our 12 we were having two options like either we can choose engineering or we can choose pharmacy so like there is if engineering is easy then do engineering or else I will do pharmacy है ना और pharmacy और medical like you will having two options कि अगर जेई क्लियर नहीं हुआ तो अगर जेई क्लियर हो गया तो इंजीनियरिंग वरना फार्मेसी कर लूँ अभी बीएससी कर लूँ राइट सो इन सिमिलर वे you can also write the conditioning in your code also and the syntax is same if you what how you like real में कैसा था अगर 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 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में if CET is cracked then engineering else BSc right so similarly in our coding it's the since the coding is related to your real life so they have also used the same word so if you want to write any equation any conditioning inside your JavaScript you write if and what is the condition and to write condition you write condition inside your bracket okay not square bracket curly bracket normal bracket उसके अंदर condition लिखते हैं कि if condition like अभी कुछ भी नहीं if condition and then
अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर तुम लोगों का सीईटी क्रैक हुआ तो इंजीनियरिंग ना, अगर सीईटी क्रैक हुआ तो इंजीनियरिंग। सो जो तो वाला पार्ट आता है ना कि अगर हाँ ये कंडीशन ट्रू है ये करना, तो दैट पार्ट यू राइट इनसाइड योर कर्ली ब्रैकेट, you write inside curly bracket and then else part, and then यहाँ पे तुम्हारा होता है, यहाँ तुम्हारा वो कोड एग्जीक्यूट होगा, और else ना if and then if else ये सुनिए, and the people who are from C they might be thinking that भाई तुम बिना सेमी कोलन के भी क्या बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट भी कर सकते हो, that's only applicable in C++, like if you have a single line then don't need to write curly bracket, but in JavaScript you need to write curly bracket inside here. And yeah, मैं एक चीज बताना भूल गया, तो जावास्क्रिप्ट का सेमीकोलन है, जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन है, but it's up to you if you want to put सेमीकोलन डालो वरना मत डालो, it's up to you, ठीक है। सेमीकोलन इसके लिए like you can like how in C++ we used to write ना integer a equal to 0 and then सेमीकोलन, यहाँ पर भी है ऐसा, but it's all up to you, like यहाँ पर कैसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर let होगा, let a equal to 0, this is valid, let a equal to 0 semicolon, this is also valid, and because semicolon is also valid, okay, so it's up to you that if you are like from C background and if you love semicolon, habit बैठ गई है semicolon डालने की, so you can put semicolon or else मत डालो, ठीक है। So now we will write a program that will check that whether our a is greater than b, ठीक है। हम let me initialize a, so a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 4। Now I need to write a program that if a is greater than b, then print me hello or else print me world, okay। So मैं कैसे कर लूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा कंडीशनल जहाँ पार्ट है ना, और मैं कर लूँगा अभी हमारी कंडीशन क्या है, हमारा डिजायर कंडीशन क्या है कि a b से बड़ा है ना, तो क्या करूँगा a is greater than b, लाइक हम चाहते हैं ना कि ये हो a is equal to b, अगर a is equal to b then क्या होना चाहिए, then it should print me hello, okay। So console dot log hello, or else what it need to print me, then it need to print me, or else it need to print me world, okay। Console dot log world, so since a is smaller than b it will print me world, but has I changed the value of a, यहाँ a 0 होता है, मैंने a कर दिया 5, so now it will print me now it will print me hello, देखा, समझा कंडीशनिंग कैसा होता है, if समझा क्या, like it's nothing but conditionally same like how we did in our career, अगर CET हुआ तो इंजीनियरिंग, नहीं हुआ तो BSc या फिर फार्मेसी, समझे ना सब लोग, ओके। और नाउ लेट्स से अगर मैं चाह रहा हूँ 3 कंडीशनिंग को, अगर जेई क्रैक हुआ तो IIT, अगर जेई क्रैक नहीं हुआ तो अगर सीडी क्रैक हो गया तो मैं नॉर्मल को भी गवर्नमेंट कॉलेज से कर लूंगा, अगर सीडी भी क्रैक नहीं हुआ तो मैं कर लूंगा बीएससी। तो लाइक क्या 3 कंडीशन है कि अगर जेई क्रैक हुआ तो IIT, अच्छा बात है, वरना सीडी क्रैक हुआ तो चले जाएगा नॉर्मल कॉलेज में, अगर वो भी नहीं हुआ तो बीएससी कर लो आगे बढ़ो। सो अब हाउ टू गेट दिस, सो फॉर दिस तो क्या है ये इफ एल्स फिर इफ, तो कैसे मैं बताता हूँ, लाइक कंफ्यूज नाउ। तो अगर तुम चाहते हो कि अगर 3 लेवल का हो कि अगर ये नहीं हुआ तो ये, सो लाइक फॉर एग्जांपल नाउ आई वांट टू प्रिंट अ प्रोग्राम दैट इफ a is greater than b then print me hello, or else if someone open your mic, someone activated your mic, I think it was by mistake, okay। So now I want to write a program that tells me if a is greater than b print me hello, if a is equal to b then print me hello world, or else just print me world। तो कैसे होगा, तो उसके लिए if else के बाजू में क्या लिखो, यहाँ पे चुपचाप if लिखो, अगर हमने if लिखा हमने वही सेम क्या है ब्रैकेट में डाला, यहाँ पे ब्रैकेट डाला हमने, यहाँ पे हमने किया a is equal to b, तो यहाँ पे हम चाहते हैं अब अगर a is equal to b then print me hello world, or else print me, ठीक है ना। मैं तुम लोगों को एक शॉर्टकट बताता हूँ ना, फॉर एग्जांपल देखो मुझे ये कंसोल डॉट लॉग को नीचे कॉपी करना है, सो 2 मेथड है, या तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और else क्या करो ना अल्ट है ना, अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की, उससे क्या करो नीचे अपना कॉपी हो जाएगा, अल्ट ALT अल्ट तुम्हारे विंडो के बाजू में अल्ट और तुम्हारा शिफ्ट और उसके बाद डाउन एरो की, तो उससे क्या होगा नीचे प्रिंट होगा।
और कॉपी होगा, और अगर तुम्हें ओप्पो कॉपी करना है तो ओप्पो कॉपी होगा। तो लाइक अगर मैं अल्ट शिफ्ट, देखो लेट्स सी एक्स्ट्रा पाया मैंने, अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर जाए तो अल्ट शिफ्ट एरो की तभी प्रिंट हुआ, और ये डाउन, ठीक है। सो ऐसा है नाउ एंड देन। अगर तुम्हें इसको मूव करना है ना, लाइक अभी इमेजिन करो मुझे ये लाइन है, अभी ये लाइन कॉपी तो हो गई, अब मुझे नीचे यहाँ पे चाहिए, तो क्या करने का, कर्सर रखो वहाँ पे, अल्ट दबाओ और एरो की दबाओ, अपना नीचे आ जाएगा। एरो की दबा के नीचे 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 आता रहेगा वो, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए अल्ट शिफ्ट और फिर डाउन एरो की, और मूव करने के लिए बस अल्ट और अप एंड डाउन एरो की, ठीक है। तो इससे ये प्रिंट हो गया। तो नॉर्मल था, उससे बता दूं हम लोग को कि बहुत से लोग नए हैं, बहुत से लोग के लिए वीएस कोड नया है, ठीक है। एंड तुम लोग बहुत से लोग सोच रहे कि जकी तेरा ये कलर कैसा है, तो ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का नाम क्या है, कलर ब्रैकेट्स। देखो कलर, तो कलर ये है ना ब्रैकेट पे, let me just full screen it and let me just extend it। ये वाला ब्रैकेट कलर पैरालाइजर, इसको तुम नॉर्मली इंस्टॉल करो, अपना वीएस कोड बनना चालू करो, इट विल बी एक्टिवेटेड। ओके, सो लाइक सो दैट दिस नॉर्मल थिंग हैज प्रोग्राम को सोचा बता दूं। या लेट्स क्लोज दिस आल्सो, लेट्स क्लोज दिस आल्सो एंड या। सो अभी मैं जाऊंगा डॉक्यूमेंट में, सो इट विल प्रिंट मी हेलो, व्हाई, because a is greater than b। Now what if I say a is equal to b, like a value is also 4, b value is also 4, so it will print me hello world। समझे, समझे कैसा है। और अगर मुझे और चाहिए, अगर मुझे लाइक अभी एक और करना है, मुझे ये भी करना है कि लाइक लेट्स से मुझे मतलब तुम्हें जितना भी एफ डालने का है, जितना एस के बाजू में एफ डालते रहो और वो नीचे नीचे आता रहेगा। समझे, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? डाउट नो, गुड। पक्का समझ रहे हैं ना, पक्का समझ रहे हैं ना? जो लोग नए हैं उन लोगों को समझ रहे हैं ना? मोहम्मद अली नागुल नहीं समझ रहा। आपको क्या समझा मोहम्मद अली? What can we write if else nested of else if else nested of else? हाँ like if no, yeah, we can also do nesting। हाँ nesting भी इसके अंदर है। Oh, अरे no doubt। So like for example, let's say मैं यहाँ पर चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे हम if कर सकते हैं, if a is equal to b and then control bracket, let's empty रखता है उसका मैं, फिर else and then if again curly bracket, let's say a is smaller than b and then curly bracket and then else। Yeah, you can also do it over here, like बहुत से लोग बोलेगा हाँ क्या किया, so nothing। मैंने इसका क्वेश्चन और किया कि yes, inside if or else if or else you can have nested if else also, like nesting इसके ना allowed है, like at any level, like इन सबको लेवल बोलते हैं हम लोग। like ये है जो मैंने अभी मार्क किया हूँ, फ्रॉम लाइन नंबर 50 टू लाइन नंबर 58, ये है लेवल 1। फिर देन लाइन नंबर 59 टू लाइन नंबर 60, ये है लेवल 2। एंड देन लाइन नंबर 61 टू लेके लाइन नंबर 60, ये लेवल 3 है। जितना ए पे अंदर डालते रहोगे उतना लेवल बढ़ता जाएगा। एंड एट ईच लेवल यू कैन अगेन राइट इफ एल्स, एंड इन दैट इफ एल्स अगेन यू कैन राइट, लाइक जितना अच्छा उतना डीप में आ सकते तुम लोग। आई थिंक राहिल समझा ना, लाइक डिड आई आंसर योर क्वेश्चन राहिल? Like yes, you can write if else inside if else also। Okay, that's great। And then there is also one thing, JavaScript के अंदर या हर लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग के अंदर ना, there are two type of conditioning। First is if, and then second is called switch statement। Switch statement is like it's like kind of switch, like तुम्हारा जो स्विच होता है ना, like हमारा घर का बोर्ड का स्विच है, उसमें हर एक बटन लगे। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला कि लाइक इट्स लाइक काइंड ऑफ इफ एल्स ही है, लाइक इंस्टेड ऑफ नेस्टेड इफ एल्स ना, लाइक स्विच में और इफ एल्स में कोई फर्क नहीं है। बस उसमें ये फर्क है कि जैसा यहाँ पे क्या हम लोग एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ करते हैं, उसके ना केस होता है, और एंड दैट केस डिपेंड्स अपॉन द आंसर। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्विच, यहाँ पे मैं लिखा स्विच, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट डाला मैंने, जो यहाँ पे की है यहाँ पे वैल्यू दिखाते हैं केस 1 डिफॉल्ट के। सो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिया कंडीशन में a प्लस b,
ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला कि चलो तुम लोग एक प्रोग्राम बनाओ जो दो वेरिएबल डिक्लेयर करता है और उनके आंसर के डिपेंड कर, लाइक इफ ए प्लस बी इक्वल टू 1 तो ये करो, अगर ए प्लस बी इक्वल टू 2 तो ये करो, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 3 तो ये करो। तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोला कि चलो मैं तुमको दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उनके आउटपुट के हिसाब से तुम लोग का एक वाला चीज है, तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग याद रखा सकते हो इफ ए प्लस बी इक्वल टू 5 नहीं 0 इफ ए फिर वापस लिखोगे एल्स इफ ए प्लस बी इक्वल टू 1 फिर ये फिर लाइक तुम ऐसे करते हो ना इफ एल्स इफ वैसे कंटिन्यू लिख सकते हो। तो इससे अच्छा क्यों ना बोलो कि इतना है ना वापस लिखना एल्स फिर लिखना, अच्छा तुम लोग क्या करते हो केस सिस्टम। तो केस सिस्टम क्या है, केस सिस्टम मतलब क्या कि यहाँ पे ए प्लस बी का आंसर, अगर ए प्लस बी का आंसर 0 है तो मुझे क्या करो कंसोल डॉट लॉग 1, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग 1, ठीक है। एंड अगर अगर केस अगर केस का आंसर आया 1, तो अभी बहुत से लोगों को समझ नहीं होगा, मतलब बहुत से लोग हाँ क्या चल रहा है, तो कंसोल डॉट लॉग 2, ठीक है। और ब्रेक, लेट मी नो फर्स्ट राइट द क्वेश्चन एंड अभी बताऊंगा क्या चल रहा है। कॉपी किया, ठीक है। you know VS Code के बहुत से शॉर्टकट्स है, you can learn it from anywhere। VS में मुझे जाके लिखोगे अपने गूगल क्रोम पे VS Code शॉर्टकट्स, बहुत ही VS Code के शॉर्टकट, ठीक है। एंड देन 2 3 4 काफी चला जाता है। एंड देन सिमिलरली 3 and then 4, so now और ठीक है। so what breaks mean what कि अगर केस 0 हो गया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि a प्लस बी इक्वल टू 0, तो केस 0 पे आएगा, लाइक आंसर 0 है ना, उसकी की वैल्यू 0 है। लाइक तुमने देखा था यहाँ पे मॉडल, देखो मैं मॉडल लिखता हूँ, स्विच लिखता हूँ, स्विच। तो यहाँ पे देखोगे तुम लोग, सो इनसाइड द सिंटैक्स, इन सबको सिंटैक्स बोलो, ठीक है। तो सिंटैक्स है, सो इन सिंटैक्स यू कैन सी देयर इज की and here is a value। So what key means? Key means the answer that is obtained after compiling or after executing the condition। If true plus false, अगर true, false, any integer, this all are key। अगर key depending upon key you write value, and whenever that if the value matches then you perform the code that then code is performed, that is written inside the case statement। and break mean what? once this is executed break it, बाहर निकलो, हो गया हमारा काम हुआ। लाइक इनसाइड if you don't write any kind of break statement, like what if अगर मतलब कैसा है ना ये स्विच स्टेटमेंट जो ऐसा है क्या कि स्विच स्टेटमेंट मतलब क्या, if a is equal if a plus b equal to 0, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट ऐसा है असली में, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट असली में ऐसा है। तो कंसोल डॉट लॉग 1 नहीं log 0, and then let me just copy it, one continue blah. So this is how switch statement is। so अभी imagine करो 1, अगर मुझे मालूम पड़ गया पहले से कि हाँ a plus b का आंसर 0 है, then I don't want my program to run this one again, because I know कि yeah a plus b is 0 and I don't want a plus b equal to 1 2 3 4 to be executed। For that we use break mean was once this is executed just break it and come outside, so that's what it is। so switch statement, the break means once this is executed just break the switch and come outside। if I don't write this break now then it will just take for case 1 and then case 2 case, and it will just go on continue doing that, but we don't want our program to just check each and every case। once the case is executed just break the switch statement। okay, so that is case। so yeah, so now let's come back to our document। so यहाँ तुम लोग देखोगे अगर switch statement में आया, let me add some error over here, this also delete it, and yeah, so now I will just give you a 0 b equal to 0 a equal to 1 b equal to 1। so see 0 plus 1 equal to 1, then it print me, then उसने क्या किया यहाँ पे की चेक किया 0 plus 1 what is 1, so 1 ये चेक करेगा कि 1 1 1 1 या केस यहाँ पे 1 है, तो ये वाला केस। अब तुम लोग ये बोलेगे कि ये केस 0 केस ना, ये केस अलग है, ये 0 अलग है।
लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे किया, अगर चलो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग किया, मैंने स्ट्रिंग किया बी किया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? चलो जैसे कि अगर हम लोग दो स्ट्रिंग को ऐड कर आंसर क्या आता है? लेट्स सी आंसर क्या आता है, a प्लस बी। सो आंसर है ए बी। सो अगर मैं यहाँ पे केस 0 हटा के यहाँ पे मैं लिखा ना स्ट्रिंग के अंदर ए बी, so then console dot log equal to 0 will be executed. So it's not case 1, case 2, case 3. It is case and then 1, 2, 3, 4, 5, 6 are the values that can be obtained after executing the condition. समझा? समझा सबको ये कि क्या है? Like this is a condition. After executing this condition, whatever the value would be obtained, depending upon their value, the case it will just find the data after case and then it will execute. And then what if now, for example, let's say let's get back to 0 and 1. Okay. So now, for example, if I say if I say which one is better, depend upon what you are doing, depend upon your needs. Both are good, both are better, like both are good as they eat at the same point, but depending upon your need, it is like basically people more often use if else, like for common programming they use if else. But if you go in higher programming, like for example, let's come in about backend web development. If user go in google.com and then in slash, so like a switch statement is used, kind of doing more difficult stuff. Switch statement is used, but it's like कैसे बताऊं यार? Both are better at their own field, but Switch people is use, kind of faster, but yeah, it's kind of if faster. takes more complicated statements. Yeah, that's right. I think you're 100% correct. That's one more way. We cannot check condition. You can check. देखो ना यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ ना, a plus b करने के बाद लाइक इसके अंदर कैसा रहता है ना, इसके अंदर कंडीशन हम पहले डिफाइन नहीं करते। जैसे यहाँ पे हम कैसा है ना, यहाँ पे हम लोग कंडीशन डिफाइन करते हैं कि यहाँ if लाइक काइंड ऑफ यहाँ कहाँ गया, यहाँ पे था ना if a प्लस, हाँ फिर मैं डिलीट कर दिया, नहीं था, मैं यहाँ पे लिखा था a प्लस बी इक्वल टू 1, a प्लस बी इक्वल टू 1 a प्लस बी इक्वल टू 2 तो वहाँ पे हम कैसा बार बार लिख रहे थे 1 2 3 स्विच। मैं वापस बोल, लेट मी रिपीट, स्विच एंड इफ एल्स दोनों काम सेम करते हैं, बस दोनों के सिंटैक्स, दोनों के लिखने के स्टाइल में डिफरेंस है। बोथ आर सेम, बोथ आर 100% सेम, बट दोनों का काम करने का तरीका, लाइक लिखने का तरीका अलग है। Yes, like स्विच स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, इसका रियली वास्ट टॉपिक, और अगर मैं भी पढ़ाने बैठा हूँ तो बहुत चल जाएगा, ठीक है। सो या, सो दिस वाज स्विच। नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, नाउ आई विल जस्ट, मैं भी बहुत स्पीड में भागूंगा, तो अगर नहीं समझा तो आस्क मी, ओके। सो दिस वाज अबाउट आवर इफ एल्स। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर लिस्ट। So now what if I tell you that you have 1,000, you have list of 1,000 variables. Now I want you to print each and every data of the list. So what you can do, one thing is that you can just like console.log ls0, ls1, 2, 3, 4, 5, 6, and you can just write 1,000 times console.log. Or else there's one thing called for loop. For loop means what? It will execute that line again and again, like बार repeat करेगा. And how it is done? So let's see. So the syntax is for, and inside here there are three parts. Like in JavaScript there are three kind of loops. In सब हम loop बोलते हैं, like तो आप सुना होगा word कि loop बोले, loop है, loop meaning what? Again and again गोल घुमाते हैं. So in JavaScript there are 1, 2, 3, 4 type of loop. Okay. 4 type of loop, but here we will just take only for loop. We will not go to while loop. You can search about while loop in programming. Okay, so and there are 3 type of for loop. So first we will see a classic for loop. So they in classic for loop you just write for and in the curly and then bracket, and then you initialize. First what you do, first you initialize a variable. Let I equal to 0, and then semicolon, and then you check condition. And you check condition. So let me, then I will explain you what it is. Let me first write it, and I will explain it what it is. And let me just write our list here again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then blah 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 blah. Okay. So let me explain what it is. So this is our classic for loop, and it has 3 syntax, 3 statements. It is followed by 3 statements.
First is initialization. What does initialization mean? Initialization mean you initialize a variable that will then मतलब इसका तीन रहता है. First is initialization, second is condition, and then third is incrementation. First you initialize variable normal, you initialize variable. Why we initialize variable I will tell you again. I'll tell you later. Okay. So like where we put down. So we initialize variable for condition purpose. अगर मैं वेरिएबल नहीं करूँगा इनिशियलाइज, सो ये क्या देगा, कंटिन्यू घूमता रहेगा. लाइक ऐसे इसमें इसके पास चाबी है ही नहीं रोकने की. लाइक कंटिन्यू फॉर लूप ना, कंटिन्यू घूमता रहेगा, कंटिन्यू घूमता रहेगा. लाइक इट विल गो ऑन टिल इंफिनिटी एंड एट वन पॉइंट तुम्हारा वेब ब्राउज़र खराब हो जाएगा, तुम्हारा रहेगा वेब ब्राउज़र क्रैश हो जाएगा. सो उसके लिए हम क्या कहते हैं, कंडीशन की यहाँ एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम फॉर लूप को तोड़ दो. एक बार फॉर लूप कंडीशन हो गया तो तोड़ दो. अब ये कैसे तोड़ते हैं, ये तोड़ते हैं लाइक एक बार कंडीशन फॉल्स होगी ना, एक बार कंडीशन फॉल्स हुई, फॉर लूप टूट गया. लेकिन अब क्या, अब देखो हमने हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि फॉर लूप को तब तक ही चलाओ जितना हमारा एरे का लेंथ है. तो हमने क्या किया, हमने फॉर आई इक्वल 0 किया, इंटीजर हमने किया, और फिर हमने क्या चेक किया, हमने चेक किया कि जो आई हमारा जो आई है वो क्या हमारी लेंथ से छोटा है. अब यहाँ पे 0 है तो वो हाँ रहेगा. और हमारी लेंथ और लिस्ट क्या है, ये कितना है, 3 6 9 10. तो 0 इज स्मॉलर देन 10. यस, तो ये बोलेगा ओके दिस इज गुड. अब ये आई प्लस क्या है ना, फिर एक बार चेक हो गया ना कि हाँ कंडीशन इज ट्रू, तो वो नीचे आएगा. आई थिंक ऐसे ही रहता है लाइक. फिर हाँ, तो फिर एक बार कंडीशन चेक होगी ना, कंडीशन चेक करने के बाद वो जो है थिंक कैसा होता है फॉर लूप, तो लाइक पहले वेरिएबल इंक्रीमेंट होता है या फिर हाँ पहले वेरिएबल इंक्रीमेंट होता है, फिर आई की वैल्यू जो है वो चेक करेगा कि लेंथ ऑफ से 0 है. हाँ 0 से 10 से 0. इसके बाद वो स्टेटमेंट है जो हमारा कंसोल लॉग किया है, ये उसको इनिशियलाइज करेगा. हाँ मैं वही बोला था. वो पहले जो कंसोल लॉग है वो उसको प्रिंट करेगा. उसके बाद वो है ना आई प्लस आएगा. अभी आई प्लस क्यों, अगर इमेजिन मैंने हटा दिया तो इसकी वैल्यू 0 और 0 रह गई. 0 10 से छोटा है तो वो कंटिन्यू ऑब्वियस फॉर लूप पे चला गया. लाइक 0 की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई नहीं ना, वो 0 का 0 ही रह गया, आगे बढ़ा ही नहीं कभी. तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम वाले आई प्लस प्लस. अभी आई प्लस प्लस मतलब क्या है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करो. ठीक है, आई की वैल्यू +1 लाइक यू नो आई +1 और आई प्लस प्लस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. इनके इसकी वैल्यू हम 1 से इंक्रीमेंट करते रहते कंटिन्यूसली. ओके, तो यहाँ पे उसने वैल्यू उसने प्रिंट किया, कंसोल लाइक किया, उसके बाद उसने उसकी जो है वैल्यू को इंक्रीमेंट किया. अभी वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 हो गई. लाइक लेट कम ओवर हियर. सो या सो देखो यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उससे पहले आई को 0 किया, लेंथ चेक किया, हाँ 10 से छोटी है, तो नीचे आया. उसे क्या किया, कंसोल डॉट लॉग ls, और यहाँ आई है ना, आई की वैल्यू 0 है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हमने आई लिखा है, लेकिन आई के पास क्या, आई के पास डेटा 0 है ना. यहाँ पे मैंने कहा था यहाँ पे ऊपर डेटा 0 रहता है वेरिएबल के पास, तो यहाँ पे उसके बाद आई के पास वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 आया. तो ls 0 क्या है, ls 0 1 है. हो गया, कोड एग्जीक्यूट हो गया. अब वो क्या करेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा +1 से. आई के वैल्यू इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू हो गई 1. तो अभी एक बार, हाँ एक बार आई इनिशियलाइज हो गया ना, फॉर लूप में एक बार इनिशियलाइज हो गया, बार बार इनिशियलाइज नहीं होता. तुम बोलोगे कि भाई अगर यहाँ आई प्लस 1 हुआ तो ऑब्वियस आई को नो. एक बार वेरिएबल हो गया इनिशियलाइज तो ऑब्वियस कभी इनिशियलाइज होता नहीं. वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली प्लस आई का वैल्यू +1 से इंक्रीमेंट किया, फिर वो डायरेक्टली यहाँ पर आएगा और चेक करेगा कि क्या 1 इज स्मॉलर देन 10. हाँ 1 इज स्मॉलर देन 10. वो ऑब्वियसली प्रिंट करेगा कंसोल डॉट लॉग ls of 1 क्या हमारा 2 प्रिंट हो गया. उसके बाद वापस से आई की वैल्यू प्रिंट करेगा 3, एंड दिस विल गो ऑन कंटिन्यू ऑन. ये ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई 1 फिर 2 3 4 5 1 2 3 12, तो ये यहाँ तक आ जाएगा. इस कम टू 231. मतलब क्या, लास्ट में हमारी वैल्यू जो थी 9 हुई, इंडेक्स ऑफ 9 पे क्या हमारा 231 के बाद उसने ऑब्वियस इंक्रीमेंट किया. 231 को उसने 9 को उसने 10 किया. यहाँ पर चेक किया 10 इज स्मॉलर देन 10, नो 10 इज इक्वल टू 10. लूप ब्रेक हुआ, बाहर आ गया. अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको यहाँ पे क्या है ना, आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10, तो लास्ट में कोई बताएगा अनडिफाइंड. क्यों, क्योंकि हमारे 10 इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है. 9 इंडेक्स पे 231 उसके आगे कुछ है नहीं, तो 10 इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है, तो वो बोला अनडिफाइंड.
ठीक है, सो ये एक मेथड हो गया फॉर लूप का दिखाने का। दूसरा मेथड क्या है, अभी इसका ना कैसा रहता है ना कि अगर हम लोग अगर लाइक इसमें कैसा है कि बार बार हम लोग जो है एल एस और ब्रैकेट आई, एल एस और ब्रैकेट आई लाइक कितना लिख लिया इंसान में थक जाएगा कि यार क्या को बार बार वही सेम चीज लिखना, लाइक बार बार एल एस आई एल एस आई एल एस आई। तो इसका क्या करा तुम लोग, तुम ये कर सकते हो कि तुम वापस से एक इनिशियलाइज कर लो, वो ए इज इक्वल टू एल एस ऑफ आई। ठीक है, लेकिन इससे भी क्या हुआ, तब भी इससे क्या हुआ, मैं क्या मैं रीजॉइन हुआ कि कोई ज्वाइन हुआ? आई वाज देयर ना, मैं था ना मीटिंग में। आई थिंक चैट दी गई तो हाँ हाँ। Yes, yes, no problem. So yeah, so what I can do is that I can initialize a variable a और उसके अंदर मैं ls करता रहूँगा। और लेकिन इसका क्या ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक ये है जब भी मेरा फॉर लूप चलेगा ना, लाइक आई को उसे कंडीशन चेक किया तो वापस से एक इनिशियल करेगा, वापस से a इक्वल टू ls इक्वल टू आई, फिर वो करेगा a। तो लाइक क्या है, बार बार हो गई, लाइक एक ही वेरिएबल जो है वो बार बार हो रहा है इनिशियलाइज हो गया है। वो क्या रहेगा, वो एक ही वेरिएबल को बार बार करेगा इनिशियलाइज। तो अब ये अच्छा नहीं है ना, लाइक को एक ही चीज को बार बार इनिशियलाइज करो, गंदा लगता है ना, लाइक कंपाइलर पे कितना लोड पड़ा रहेगा। अलग अब तुमको बोलूँ कि इसको अगर तुम्हें एक ही काम बार बार करने बोल, तुम्हें अजीब लगेगा, बोलेगा कि पागल इंसान एक ही काम बार बार करने बोल रहे। सो वो सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है कि बार बार हम लोग एक तो इसका क्या, इसका दूसरा मेथड है फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच एरे डॉट फॉर ईच। और ठीक है, तो ये जो फॉर ईच मेथड है ना, ये फॉर ईच मेथड हमारे लिस्ट का है। सो ये इसका सिंटैक्स है, लेट मी राइट लिस्ट पे कैसे। तो हमारे लिस्ट का नाम क्या है, हमारे लिस्ट का वेरिएबल का नाम है ls। ठीक है, सो ls फिर डॉट फिर फॉर ईच। ठीक है, ls डॉट फॉर ईच और फिर ये एलिमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे आया आई और फिर ये एरो ब्रैकेट, ये एरो, ठीक है, ये एरो बोलते हैं इसको, एरो और फिर कर्ली ब्रैकेट। अभी मुझे अगर प्रिंट करना है कैसे करूँ, कंसोल डॉट लॉग और फिर आई। तो इससे क्या होगा, array is not defined। तो यहाँ पर देखो तुम लोग अनडिफाइंड 3 बार दिया तो ओके आई 0 आई थिंक शायद ऊपर का दे रहा होगा वो कुछ नहीं। हाँ, ये ऊपर का लिस्ट हमारा ऊपर का, ऊपर का दे रहा है, ये नीचे का भी हमारा, ये नीचे का। ठीक है, लेकिन फॉर ईच में क्या है, फॉर ईच का ड्रॉबैक ये है कि वो बस फर्स्ट वेरिएबल लिया और सेकंड वेरिएबल लिया और सीधा डायरेक्ट लास्ट वेरिएबल का, उसने बीच का एलिमेंट लाइन। तुम बोले कि ये जबकि ये कैसा यार, लास्ट वेरिएबल तो है ही नहीं, मेरे पास सारे वैल्यू चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है ना, कैसा होता है इसमें, कैसा मतलब इसके अंदर लेट मी जस्ट सी, सारे एलिमेंट आना चाहिए, ऐसा नहीं रूल क्यों हमारे इसमें। ऊपर का जो है कहीं, वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा ना शायद। नहीं मैं फॉर ही चला गया, फॉर ही चलना है। फॉर ईच में पहले इक्वल टू आया ना। नहीं ये इक्वल टू साइन नहीं है, ये एरो फंक्शन है। इसे बोलते हैं एरो। ये जो है ओके ये है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन, ये एरो, ये ऐसा एरो है, ये स्मॉल इक्वल टू नहीं, ये एरो है, ये एरो। लेकिन इसको सारे फंक्शन लेना चाहिए। चेक मैं स्निपेट भी लिख कर रखा था। स्निपेट में भी सेम लिखा था। ओके। यस मैं लिखा हूँ। हाँ वो
हाँ बड़ी वीडियो में देखा है वो ऊपर था, सॉरी ऊपर था, मेरी सॉरी। तो ये देखो ये मैंने अभी से इसको मैं कमेंट किया, तो फिर ये फॉर लूप से हमारा एग्जीक्यूट किया, तो देखो यहाँ पे कैसा किया, सेम ही कोड है, सेम ही काम सेम हो रहा है, लेकिन तुम देखो कोड पे कितना डिफरेंस है। यहाँ पे कितना 1 2 3 4 लाइन लगा हमको, 4 लाइन के ना 3 स्टेट में, कि पहले इनिशियलाइज करो, फिर कंडीशन चेक करो, फिर आई प्लस प्लस करो, फिर उसके बाद लॉक करो। यहाँ पे क्या हुआ फॉल्स का मतलब क्या, ये क्या करेगा ना, अभी इसमें ये फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप के ना हम लोग थ्रू इंडेक्सिंग कर रहे थे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे नंबर था, यहाँ की 0 1 2 3 4 5। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो जो एलिमेंट है ना, फॉर ईच में क्या कहता है, फॉर ईच वो हर एलिमेंट को डायरेक्ट देता है। लाइक यहाँ पे आई जो है, ये आई हमारा एलिमेंट है ये लिस्ट का, लाइक 1 2 3 4 5। लाइक अगर कोई यहाँ पे पाइथन डेवलप होगा, जैसा हमारा था ना फॉर आई इन लिस्ट, तो वैसे से यहाँ पे एलएस का फॉर ईच है। और जो लोग पाइथन बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए मतलब फॉर ईच मतलब क्या, इंस्टेड ऑफ ये 3 लाइन का कोड सेम जो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं, फिर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर प्रिंट कर रहे हैं, आई जो है फॉर ईच काम वही सेम करता है। लाइक इंस्टेड ऑफ 3 लाइन एक टाइम में काम हो गया। और ये नया मेथड था जो ES6 में आया। अब ES6 क्या है, जावास्क्रिप्ट का लाइक समझ लो ना कि तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का एक नया वर्जन है। तो ये नया वर्जन क्या जावास्क्रिप्ट में हमने लाया है कि ताकि हम डेवलपर लोग फटफट लिखे। ठीक है, ये हो गया फॉर ईच। और दूसरा आता है ना, दूसरा है फॉर इन। तो लाइक ऐसे हम फॉर लिखेंगे ना, तो लोग यहाँ पे आएगा कि फॉर ईच, ये नहीं देखना है अभी, फॉर ईच, फॉर इन, फॉर ऑफ। तभी हमने फॉर ईच देख लिया। फॉर इन क्या था, फॉर इन हमारा था ना फॉर ये जो है ना ये वाला मेथड, इसको ये है फॉर इन। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना, ये है फॉर इन, ये है हमारा फॉर ईच। और अभी हम देखते हैं फॉर, नहीं सर ये है फॉर ऑफ है आई गेस, चल देखते हैं फॉर ऑफ। हाँ ये अब ये है फॉर ऑफ। फॉर ऑफ और फॉर ईच में ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके अंदर कैसा है, यहाँ पे हम लोग आई इज इक्वल टू 0 कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्या इनिशियलाइज 0 आई को, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया था 0 को कोई इंटीजर। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, हर एक यहाँ पे जो है ना वेरिएबल, इसको करें इनिशियलाइज हम लोग कर रहे हैं किससे, हमारे लिस्ट के एलिमेंट से। ठीक है, लाइक अभी समझ आएगा समझो कि यहाँ पे क्या मैं आई, यहाँ पे क्या मैंने ls, और यहाँ पे मैं आया कंसोल डॉट लॉग आई। ये देखो, सो लेट मी जस्ट प्रिंट करना यहाँ पे कि अलग अलग लिखे, कंसोल डॉट लॉग फॉर ईच। ठीक है, और ये है कंसोल डॉट लॉग फॉर ईच, ये है कंसोल डॉट लॉग फॉर ऑफ। ये देखो ये फॉर ऑफ का हमारा था, सेम ही काम है। इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोग आई इक्वल टू 0 कर रहे थे। लाइक हम लोग यहाँ पे जो हमारा था वेरिएबल था, हम उसको एक अपनी तरफ से दे रहे थे वैल्यू कि हाँ आई 0 है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो है फॉर ऑफ में हम लोग आई को जो है ना, वो हमारा जो एलएस का एलिमेंट है ना, लाइक ये सब कहाँ गया, सो इसका स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है, चाहिए ना। स्पेस सो फॉर ईच में क्या था ना, सो हमारा फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, फिर कंडीशन उसमें क्या था, हम लोग इसको टारगेट करे थे हम लोग, ये हमारा था टारगेट। ठीक है, हमारा टारगेट ये था, लाइक फॉर आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन इक्वल टू लेंथ आई प्लस प्लस। तो उसमें हम लोग इसके जरिए हम लोग हमारे वैल्यू प्रिंट कर रहे थे। लेकिन फॉर ईच में क्या था, फॉर ईच के अंदर जो हमारा फॉर लूप था वो डायरेक्टली इसको कर रहा था, वो डायरेक्टली बंदा जो था हमारा फॉर लूप, वो बंदा डायरेक्टली इसको प्रिंट कर रहा था। लाइक वो उसने ना क्या किया था, उसने तुम्हें डायरेक्टली बोला लो भाई ये लो सामान पकड़ो। लाइक अगर देखो, अगर मुझे सामान देने का है तो मैं क्या करता हूँ, ज्यादा सामान में तुमको यहाँ से दिया, तो ऐसा है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं एक बंदे को दिया ये ले फरहान, यहाँ उसको दे देना, तो ये हुआ। तीसरा चीज क्या है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली दूँ। तो फॉर ईच क्या कहता है, फॉर ईच जो है तुम्हें लेता है कि ये लो भाई पकड़ो सामान काम करो। फॉर ऑफ क्या कहते हैं, फॉर ऑफ है ना एक बंदे को बोलता है कि जैसे मैं हूँ, मैं फॉर ऑफ फरहान ये ले सामान और देते सारिन को। तो फरहान क्या देगा, फरहान लेगा सामान,
फान या बोला कि ये ले भाई, ये जकी ये लिया। जैसे क्या हो सकता है, मैं बोला ये ले सारी सामान ले, पकड़, जो काम करने कर। तो फॉर ईच क्या है, फॉर ईच जो है, लेट मी शो माय कोड। तो फॉर ईच क्या, फॉर ईच बोलते हैं ये लो भाई सामान डायरेक्टली तुम लोग पकड़ लो, ये लो जो करना है ऐसा करो। हमारा ये फॉर ऑफ क्या कहते हैं, फॉर ऑफ बोलते हैं, फॉर ऑफ बोलते हैं आई ये ले सामान पकड़, और बाद में जो बनता है, जो नीचे कोड है यहाँ पे, यहाँ जो कोड है उसने वहाँ पे आई 0 आया। लेकिन इधर में क्या, इधर में डायरेक्टली बोला ले ले भाई पकड़, जो काम करना है काम कर। लाइक तुम देख रहे हो क्या कितना कितना कोड का अगर यहाँ पे देखा जाए। सो अगर अगर हम लोग देखा जाए हायरार्की वाइज, सो अगर हायरार्की वाइज देखा जाए हम लोग, तो ये देखो, ये तीन डिफरेंट फॉर लूप है, ये तीन डिफरेंट फॉर लूप है, लेकिन तीनों काम एक कर रहे हैं, बस काम करने का तरीका अलग है। ये वाला क्या करना है, यहाँ पे हम पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं, फिर कोड एग्जीक्यूट करते हैं, फिर वापस से इंक्रीमेंट करते हैं, फिर लाभ वाला ये है। इसमें क्या, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली जो वेरिएबल है, डायरेक्ट वेरिएबल है, हम उसकी जो वैल्यू करते हैं इनिशियलाइज। यहाँ पे जो कॉन्स्ट आई है ना, कॉन्स्ट का मतलब क्या है, वैल्यू हुई इनिशियलाइज। जहाँ पे कॉन्स्ट आया, लेट आया, वार आया, मतलब क्या, वो जो चीज है वेरिएबल है वो हुआ है क्या, वो हुआ है इनिशियलाइज। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आई को हमने क्या इनिशियलाइज किससे, एलएस के, और एलएस क्या, ऑफ एलएस बोला है। एलएस में ऑफ एलएस मतलब क्या, एलिमेंट ऑफ एलएस उससे हुआ इनिशियलाइज। ठीक है, तो आई को मिला वैल्यू और फिर आई ने दिया। और फॉर ईच में क्या, फॉर ईच में डायरेक्टली जो है आई जो है ना, ये आई ऐसा नहीं कि हमने आई को वेरिएबल दिया, नहीं, ये आई जो है ये उस वो डेटा जो है ना, लिस्ट का डेटा है वो है, और डायरेक्टली क्या है, यहाँ आई और डायरेक्टली सेलेक्ट। फॉर ईच मतलब क्या, डायरेक्टली लो, फॉर ऑफ एक बंदे के दरमियान, और फॉर इन क्या, पूरा घुमा फिरा के लाके दो। ठीक है, समझे ना फॉर लूप का क्या है। इज देयर एनी परफॉर्मेंस डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री फॉर्मेट? हाँ, तीनों के अंदर परफॉर्मेंस डिफरेंस है। तो सबसे फास्ट है, ऐसा मैंने पढ़ा था, साइगोफोर में पढ़ा था, जो सबसे फास्टेस्ट है वो तुम्हारा फॉर ईच है, ये सबसे फास्ट है। ये वाला सेकंड नंबर पे, और फिर ऐसा लाइक इतना सारा डिफरेंस नहीं है, इतना सारा डिफरेंस नहीं, लाइक पॉइंट मिली सेकंड डिफरेंस है। और दूसरी बात क्या, कोड भी लिखना आसान है। कोड भी देखो ना, एक लाइन के अंदर मैं पूरा लिस्ट प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे कितना लग रहा है, यहाँ पे मुझे, अगर मैं डेटा इनिशियलाइज किया उसके बाद मुझे दे रहा है। तो किसी को क्वेश्चन, कोई डाउट है, इसमें डाउट होना चाहिए हमको, जो लोग नए प्रोग्रामिंग को, वो ये कैमरा क्या, हेलो, किसी को क्वेश्चन है सेकंड मीटिंग वालों, कुछ तो बोलो, तुम लोग चुप ही बैठो पूरी तरीके से। कोई डाउट है किसी को? बस हाँ, वो कंडीशन में चेक नहीं करता और डायरेक्ट प्रिंट करता है, सही बोला। हाँ, तो किसी को कोई डाउट है? हम लोग टाइम से रन कर रहे हैं, अभी फॉर लूप हो गया, अगला है फंक्शन और क्लासेस। अगला अभी मेन प्रोग्रामिंग चालू हो गई तुम लोग। हेलो, क्वेश्चंस? यस नहीं है तो यस नो कर लो, अगर समझा ना, समझा, यस नो करो। तो अभी ये हो गया हमारा फॉर लूप। ठीक है, तो अभी ये हो गया ना, बेसिक चीज हो गई। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हम लोग जो है, लेट मी जूम इन, करने दो। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोग अभी तक गैस देखोगे तो अभी तक हम लोग जो है हमारे स्क्रिप्ट टैग का, हम लोग इस स्क्रिप्ट टैग का सारा काम कर रहे थे। अभी ये चीज जो है ना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं। कोई कुछ आवाज किया था? ठीक है, अब ये चीज है ना बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब क्यों नहीं अच्छी, इसका रीजन बताता हूँ। इसका रीजन ये है कि अब जब भी बंदा, अब देखो मैंने यहाँ पे इसको मैं क्लोज किया, मैंने एलिमेंट क्लोज किया, वापस इस पर एलिमेंट करता हूँ, लेट मी बिग, इसको मुझे थोड़ा करने दो। अब ये चीज अच्छी क्यों नहीं है, क्योंकि अब देखो, अब समझो तुमने बनाया वेबसाइट, ठीक है, तुमने एक वेबसाइट बनाया और वहाँ पे तुमने रखा है यूजर का ऑथेंटिकेशन रखा है, तुम्हारे कुछ एपीआई के की से, ठीक है, तुम्हारे एपीआई के की से, लाइक तुम्हारा सारा सिक्योरिटी गाइड तुमने रखा। अब अगर तुम
वो सारी चीज को ऐसा स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखोगे ना, और उस सारी चीज को स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखोगे, तो बंदा डायरेक्ट देख पाएगा कि हाँ देखो भाई साहब ये इसका है एपीआई की है। तो क्यों, अभी कैसे जगह बताता हूँ। अगर ये तुम्हारा ना, इसको बोलते हैं एलिमेंट टैग। और यहाँ पे जब बॉडी को खोलूंगा ना, बॉडी को मैं खोल देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा है, ये स्क्रिप्ट लिखा है। अगर मैं इस स्क्रिप्ट को, ये नहीं तुम्हारा वो लाइव सर्वर है, अब मैं स्क्रिप्ट को खोलूंगा, देखो मुझे पूरा का पूरा मेरा कोड दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ किसी को मेरा बैकएंड कोड दिखे, कौन कौन चाहेगा कि तुम्हारा जो बैकएंड का कोड है वो किसी को दिखे, कोई चाहेगा ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एक अलग से स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, इंडेक्स डॉट जेएस, हम स्क्रिप्ट फाइल बनाए जैसा कल सीएसएस का क्या डॉट सीएसएस, यहाँ जावास्क्रिप्ट का जावास्क्रिप्ट डॉट जेएस बनाया फाइल। हम क्या करेंगे, जो सेम प्रॉपर पूरा का पूरा कोड उठाएंगे, कैपिटल लिखा हमने पूरा, ये कोड हमने पूरा उठाया, हमने कट किया, यहाँ पे लाया, अब पेस्ट किया। अरे यार मैंने कुछ और पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट यहाँ से कट, ठीक है। अब तुमने बोला कि अरे ठीक है, अब हमने कर लिया, स्क्रिप्ट टैग कर लिया, हमने कर लिया, हाँ। फिर मैं यहाँ पे आया वापस से, लेकिन मुझे यहाँ कुछ कंफर्म दिखा नहीं है। तुम बोले कि भाई तूने अलग बना तो तुझे, तुम बहुत अलग बनाएगा अच्छा रहेगा, लेकिन जो चल नहीं है तो फायदे क्या। अब क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि तुम्हारे हमने इसको लिंक नहीं किया। इसको लिंक करने के लिए क्या चाहिए रहता है, ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है एसआरसी। उस एसआरसी के अंदर तुम लोग जो फाइल है तुम्हारा उसको डाल दो। तो जैसे मेरा नाम क्या, मेरा नाम है इंडेक्स और जेएस, मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा इंडेक्स और डॉट जेएस, इसी में डाला, स्क्रिप्ट टैग के अंदर डाला, F5 दबाया। Zaki, the spelling of index is missing in the upper file. You have named it index. Okay, thank you. मैंने देखा है टैग को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स में क्लिक किया, and then if I come over back, see my code is running, but now the person cannot see my file. Why? Because it is showing me here src source index.js. Now my file is safe. Nobody can see my file until and unless he is not a hacker. Okay, so what is the use of writing your file in another .js file? Is of security issue. You don't want, like, who want their code to be shown to everybody? No one wants. Like if I go in, even if I go in meeting, if I just do inspect element, and if I just try to find out, if I try to find out my script tag over here, see this is script tag, script unknown. So this is, I don't know what it is, but yeah, see over here, everything is over here is hidden. Like look, security issue बहुत है। Like ये सब पूरा कंपाइल्ड वर्जन है, समझेगा मेरा, इस लिटरली इम्पॉसिबल यहाँ से हम स्क्रिप्ट टैग ढूंढ लेंगे, लेकिन यूजुअली लोग स्क्रिप्ट टैग अलग रखते हैं। अब दूसरा रीजन था कि तुम लोग बोल जाएंगे कि यू टोल्ड अस दैट टू राइट स्क्रिप्ट टैग at the end of a body tag. Now why? Because now let's say यहाँ पे मैं लिखा, यहाँ पे मैंने मारा h1, ठीक है, यहाँ पे मारा h1 hello हुआ, ठीक है, यहाँ पर आया। So अब क्या होगा ना, अब now I will tell how your web browser did. Let me open my code side by side. So what the web browser did? First of all, your web browser print the hello world. उसने पहले hello world को किया, रेंडर किया, उसने उसके बाद फिर तुम्हारा index.js से उसको रेंडर किया। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ऊपर नीचे कर दूं, तो पहले क्या करेगा वो पहले जो है पूरा जो है जावास्क्रिप्ट का फाइल कंपाइल करेगा, उसके बाद कंपाइल किया, सारा कोड एग्जीक्यूट किया, इंटरप्रेट किया, जो काम पूरा काम किया, वो सारे काम करने के बाद वो आएगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। अब तुम लोग बोलोगे तो इसमें टेंशन क्या है, अच्छा है ना पहले हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? इससे तुम्हारा कोड, तुम्हारा वेबसाइट स्लो हो जाती है, लिटरली स्लो। तुम इमेजिन करो अगर तुम्हारी बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, और अगर तो कस्टमर लाइक लेट्स सी अस कस्टमर, अगर कोई भी वेबसाइट को 2 सेकंड ज़्यादा लगता है लोड करना, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट बंद करते हैं और अब कोई दूसरी वेबसाइट में, तो क्या हुआ, इससे लोग हमारी वेबसाइट पे आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी वेबसाइट स्लो है। अब तुमने बोला वैसे कि तो हम लोग फिर इसे क्लाउड पे डाल देंगे, ये कैसे वो करेंगे, तो क्लाउड पे डाले भी, जो क्लाउड से फेच करने में जो क्लाउड से फेच करने के बाद लाइक पहले क्लाउड पे कंपाइल होगा, फिर क्लाउड से कंपाइल होने को वहां से डेटा फेच कर देगा, फिर तुम्हारे पास आएगा, तभी इट्स टेकिंग टाइम ना। तो इसलिए यूजुअली प्रीफर कि पहले ना सारा जो है पहले एचटीएमएल दे दे, पहले दिखा देगी, हाँ लोगों को बता दो कि तुम्हारी वेबसाइट लोड हो गई है। अगर मैं इसको से उल्टा करूंगा ना, मेरी वेबसाइट लोड हो चुकी है, वेबसाइट में लोड हो जाएगी, लेकिन जो हेलो वर्ल्ड है सब आएगा नहीं,
क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट चल रहा है, जावास्क्रिप्ट के चलने के बाद मैं एच1 प्रिंट करेगा, तो इसलिए राइट इट एट द एंड ऑफ द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। अभी हम लोग ना क्लास और फंक्शन चालू करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम अभी करना चाहिए या फिर guys let me ask you what do you want, like you want to learn? नहीं, मैं खुद ही कर लेता। ठीक है, so okay, let's start our object based programming. Hello, Okay, so Zaki. let me There is a question in the chat box. Scroll down. is source folder is in source folder, it is visible. हाँ, it will be visible over there, लेकिन नॉर्मल यूजर को कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ सोर्स के अंदर है? वो तो लाइक तुम्हें इतना अंदर डीप में जाना पड़ेगा ना कि हाँ यहाँ है। इतना लाइक कितना लाइक कॉल आ रहा है। ठीक है, तो लाइक सोर्स में जाना पड़ा, लेकिन तुम्हारे कोड में दिख रहा नहीं ना, लाइक कोड में एलिमेंट दिख नहीं रहा है ना यहाँ पे, वो बात है। और अगर तुम लोग बोलोगे कि सोर्स में दिख रहा है, सो अगर तुम लोग जैंगो करोगे ना, अगर तुम लोग आगे आए, तुम लोग जैंगो रिएक्ट करोगे, लाइक अभी जो क्या नॉर्मल है, ये तुम्हारा फ्रंट एंड है, दिस इज योर फ्रंट एंड। अगर तुम लोग प्रोग्रामिंग में आओगे, जो मेन प्रोग्रामिंग जिसका बैक एंड होता है, जावास्क्रिप्ट बैक एंड फ्रंट एंड दोनों लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट बैक एंड फ्रंट एंड दोनों लैंग्वेज। जब तुम लोग रिएक्ट से करोगे, एक्सप्रेस करोगे, नहीं मालूम मत डरो, ये सारे फ्रेमवर्क्स है, लाइक ये सब मटेरियल है जिससे हम लोग वेबसाइट, रियल वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, तुम्हें क्या सीरियस है कि तुम मीट क्या बस जावास्क्रिप्ट में नहीं, जब फ्रेमवर्क यूज हुआ गया, तो जब फ्रेमवर्क यूज करते हैं ना हम लोग, तो फ्रेमवर्क तो फ्रेमवर्क में दिखता नहीं है, और फ्रेमवर्क के अंदर भी जब हम लोग को जैंगो जब तुम वहाँ पे लिखते नहीं हो, लाइक एचटीएमएल लिखते नहीं हो, तो एचटीएमएल के बाहर लिखते हो, जावास्क्रिप्ट फाइल हमेशा यूजुअली बाहर लिखी जाती है। और जैसा कि कल हमजा ने कहा था, लोग अगर तुम्हारी वेबसाइट बाहर रहेगी, इमेजिन करो तुम्हारा इंडियन अलग फाइल रहेगा, तो अगर मैं हमजा को बोलूंगा, हमजा भाई तो है ना फ्रंट एंड कर, मैं बैक एंड करता हूँ, मैं उसको बोलूंगा भाई फ्रंट एंड का बैक एंड, तो क्या रहेगा वो? अगर हम लोग सेम इंडिया का एचटीएमएल फाइल करें तो क्या होगा? मैं इंडिया एचटीएमएल के अंदर मैंने लिखा, स्क्रिप्ट टैग का लिखा, उससे लिखा फ्रंट एंड का। अभी मैं रहता हूँ इंडिया में, वो रहता है आउट ऑफ इंडिया, तो उसने ना कोड भेजा, तो मैंने उसका पूरा कोड कॉपी किया, कंट्रोल एक्स मारा, अपने पे चला, कितना लंबा काम है ना। उससे क्या करो, डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग डाला, मैं क्या करूँगा, अपनी फाइल कॉपी करूंगा, स्क्रिप्ट टैग के अपना सोर्स डालूंगा, हो गया, हम दोनों के साथ क्लब हो गए। तो इसलिए हम बाहर लिखते हैं। I think better accessibility, shared resources, better accessibility, right? Yes sir. ठीक है, so now let's move on to another thing. Now let's see functions. अब function क्या? Function are nothing but, बताता हूँ क्या। Let's start function with real life example. अभी मैं तुम लोगों को बोला कि write a code that, like मैं तुम लोगों को बोला कि write a code जो 1000 बार चेक करता है, जो 1000 बार है ना, लाइक मैं तुमको बोला कि तुम लोग को है ना 1000 नंबर का एडिशन करना है, तुम लोग को 1000 नंबर का एडिशन करना है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम क्या करोगे? तुम बार बार जो है a+b, c+d, e+e ऐसा 1000 बार लिखोगे। या दूसरा ऑप्शन क्या है? तुम ये चाहोगे ना कि काश ऐसा कुछ होता कि जहाँ पे मैं a+b एक जगह लिख देता और बस मुझे उसके अंदर नंबर लिखना पड़ता, लाइक उसका, और लाइक फॉर लूप भी है, ऑब्वियसली फॉर लूप भी है, तो फॉर लूप कर सकते हो, और लाइक फॉर लूप में अगर 1000 टाइम है तो ऑब्वियसली हम फॉर लूप्स करेंगे। लेकिन नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल, हटाओ ये इतना गंदा था, इतना बहुत गंदा था ना। फॉर एग्जांपल मैंने एक कोड का कंपाइल लिया, एक बहुत सारा जंक ऑफ कोड है। अभी उस जंक ऑफ कोड के अंदर, उस जंक ऑफ कोड को मुझे बार बार रिपीट करने का। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक यूजर होता है, एक मेरे पास एक चीज है जो बार बार एग्जीक्यूट होगी। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि एग्जांपल याद नहीं आ रहा, जैसे कि समझ लो मैंने एक रेंडरिंग बनाया जो ये ग्लास को रेंडर करेगा। अभी हाँ लॉजिक चेक, तो हाँ लॉजिक चेक, अभी एग्जाम्पल करो मैंने ऊपर एक लॉजिक चेक किया, अब मैं वापस अभी मुझे वो लॉजिक चेक वापस से रिपीट करने में क्या करूँगा? मैं वापस ऊपर जाऊँगा, कंट्रोल सी, और फिर से कंट्रोल वी। अभी दूसरी फाइल, अभी इमेजिन करो दूसरी फाइल होगी, ठीक है, ये एक हो गया init.js। इमेजिन करो मेरे पास दूसरा फाइल है जिसमें test.js, तो मैं क्या वापस से कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा। लाइक क्या वो एक ही कोड बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। लाइक कोई भी नॉर्मल प्रोग्राम बोलेगा कि यार बंदा पागल भी रहे क्या, कि बार बार एक ही कोड रिपीट कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन नथिंग बट दे आर यूज टू, लाइक वो है ना, ऐसा मैं दिखाता हूँ कैसा होता है कि प्रॉपर डेफिनेशन बोलूँगा। फंक्शन
लाइक क्या फंक्शन एक चीज है जिसके अंदर हम एक बार कोड डाल देते हैं जिसमें बार बार अगेन एंड अगेन कॉल कर है जावास्क्रिप्ट फंक्शन। हाँ, ब्लॉक का कोड इज डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। लाइक मैंने एक बार लिख दिया, अब जब भी मुझे ये काम ऑब्वियस करने का मैं बस उस फंक्शन को कॉल करूंगा। लाइक अभी मुझे ऑब्वियसली है, अगर मुझे हमजा से काम वाला बोलूंगा भाई हमजा काम वाला, मुझे उसके लिए हमजा को कॉल करना पड़ेगा। हमजा भाई सुन ये काम कर, क्या मुझसे कॉल किया। तो वैसे ही अगर मुझे वो कोड जो रहेगा वो एक्शन वो मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो क्या करूंगा उस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा। नेक्स्ट फंक्शन भाई आओ ये काम करो, ठीक है। सो फंक्शन इसमें दो होते हैं क्या, फंक्शन इनिशियलाइजेशन और फंक्शन कॉलिंग। अब हम देखेंगे क्या फंक्शन फंक्शन कैसे होता है इनिशियलाइज। तो फंक्शन इनिशियलाइज करने का सिंटैक्स है, पहले क्या लिखने का, पहले लिखने का फंक्शन, ठीक है, फंक्शन लिखा और फंक्शन के बाद उसका नाम लिखने का। जैसे मेरा नाम जकी है, हमजा, दिनेश, तो सबका नाम वैसे फंक्शन का नाम लिखने का। तो यहाँ पे मैं नाम लिखा, मैंने क्या लेट्स से मैं बना रहा हूँ फंक्शन जो एडिशन करता है, तो मैं क्या रखूँगा, इसका नाम रखूँगा एडिशन, ठीक है। अभी एडिशन करने के लिए ऑब्वियसली मुझे 2 नंबर लगेंगे, फंक्शन के एडिशन में 2 नंबर लगेंगे। अभी फंक्शन सिंस एक कोड ऑफ ब्लॉक है, तो इसमें तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा ना, लाइक फंक्शन मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, फंक्शन कैसे मालूम पड़ेगा भाई कौन से 2 नंबर ऐड करना है, उसके ऊपर भूल जाएगा क्या। तो वो 2 नंबर हम कहाँ पास करेंगे, वो 2 नंबर हम पास करते हैं पैरामीटर में। पैरामीटर इज नथिंग बट सम डेटा दैट इज पास टू फंक्शन टू एग्जीक्यूट इट, ठीक है। लाइक मैं अभी इमेजिन करो हमजा को, मैं हमजा बोला भाई केक बना, तो ऑब्वियसली हमजा बोलेगा ना भाई सामान तो लगे दे, केक कैसे, हाँ ऑब्वियसली लेके आऊँ, ऑब्वियसली ना। हमजा को केक, अगर मुझे केक खाना है तो मुझे हमजा को आटा, दूध, जितने भी सामान है सारा इंग्रेडिएंट लाके देना पड़ेगा, वो उस इंग्रेडिएंट लेने का वो बनाएगा ना। वैसे ही पैरामीटर नथिंग बट इंग्रेडिएंट जो मैं उसको दे रहा हूँ, तो लेने के बाद वो उस पर काम पड़ेगा। एडिशन मुझे करना है 2 नंबर एडिशन, तो अगर मुझे 2 नंबर का करना है एडिशन, तो उसके लिए मुझे 2 नंबर पास भी करना पड़ेगा। तो कैसे पास करते हैं, ए कॉमा, क्या करूँगा मैं, ए कॉमा बी, ठीक है, 2 नंबर मैं पास कर लिया। अभी जो कोड मुझे एग्जीक्यूट करना है वो मैं लिखूंगा किसमें, वो मैं लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं करूँगा वॉर आई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो अब ये हो गया। अभी मुझे चलो हो गया, अभी मुझे इसको प्रिंट करना है, क्या करूँगा कंसोल डॉट लॉग। अभी सेल एडिशन वाला पार्ट हम लोग मैं क्या करूँगा एडिशन, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1 और 2 सप्लाई करूँगा। तो यहाँ तुम देखोगे, ठीक है, हाइड किया, तो ये लाइन नंबर 101 बोल रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों बोल रहा है भाई, यहाँ पे जब तुमने एडिशन किया, अब ये इसलिए किया क्योंकि तुमने एडिशन तो कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने हमजा को आटा दे दिया, उसको मैंने सारे केक बनाने का सामान दिया, उसने केक बना भी दिया। अब भी अगर मुझे केक खाना हो तो केक मुझे देगा, बबुल से देगा कि ये ले भाई ले केक पकड़, वैसे मुझे ऑब्वियस करेगा। तो ऑब्वियस क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑब्वियस ने बोलते हैं रिटर्न। तो अगर फंक्शन के अंदर कुछ कोड एग्जीक्यूट करने के बाद अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो क्या करूँगा मैं, वो होगा रिटर्न, जो नाम है वही है काम। तो क्या करना है रिटर्न, मैं लिखूंगा क्या, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न। और मुझे क्या करना है वापस, ये फंक्शन मुझे क्या वापस करेगा, 2 नंबर का एडिशन, वो मैंने कहाँ से वो मैं सेव लगा 1 पे, तो क्या आई में सेव किया, आई में वेरिएबल आई में सेव किया, तो मुझे क्या वापस करना चाहिए आई। अब जब उसने मुझे वापस किया आई, तो देखो यहाँ पे आया 3 आया। अभी मैं जो मुझे नंबर चेंज करना है तो मैं कर दिया 13121, तो वो आंसर क्या आएगा 1314। तो ये आई हुआ। अभी बहुत से लोग ये बोल रहे हो कि चैट में कि भाई तो यहाँ पे कंसोल increase the size, can you please increase the font? Is it visible now? Yes, much better. Much better ना, ओके। सो अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जकी इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग आई यहीं पे कंसोल कर लो। हाँ वो भी कर सकते हैं, एंड वी कैन आल्सो इवन डू दैट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूँगा ना, अभी यहाँ पे कंसोल लॉग किया और कंसोल लॉग आई, तो फिर मैं कंसोल लॉग आई के अंदर डाला तो ये चल रहा है। लेकिन अगर तुम लोग दूसरी लैंग्वेज में जाओगे, लाइक जावास की 32, अगर ऐसा बोलो ना जावास की लैंग्वेज 32 लैंग्वेज है, इसके अंदर सब कुछ चलता है। जावास के अगर देखा नॉर्मली अगर हम लोग प्रोग्राम इसको 32 लैंग्वेज देखो, इसके अंदर सब कुछ चलता है। और जावास्क्रिप्ट लिटरली बोलो ना, आज तुम लोग सीख रहे कुछ भी नहीं जावास्क्रिप्ट बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं कंसोल लॉग हटा जाए तब भी अगर देखो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं रिटर्न हटा दिया और मैं इसे कॉल कर लूँगा एडिशन आई 1,2, ठीक है। ये मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी हमेशा कंसोल लॉग होगा नहीं ना, अभी हमेशा तो प्रिंट होगा नहीं।
अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यूजर का ऑथेंटिकेशन चेक कर रहा हूँ तो उसके बाद मुझे कुछ तो लाइक किया, उसका टोकन आईडी को किया, अब टोकन आईडी थोड़ी मैं ऐसा कंसोल लॉग करूंगा, लाइक टोकन आईडी मिलने के बाद और उस टोकन आईडी पे कुछ काम करूंगा, तो उसके लिए हम यूजुअली क्या बोलते हैं, यूजुअली बोलते हैं कंसोल लॉग आई, मैं फालतूगिरी डायरेक्टली जो है रिटर्न आई करो, ठीक है। लेकिन अगर इन केस में कंसोल लॉग आई करूंगा यहाँ पे किया, तो अब देखो कोड काम से कर रहा है, मैंने कंसोल लॉग बुलाया, एडिशन बुलाया, मैंने एडिशन आया, एडिशन यहाँ पे आया, उसने 2 पैरामीटर लिया, आई को किया इनिशियलाइज और उसके अंदर ए और बी का एडिशन डाला, उसके बाद उसने आई को प्रिंट किया, उसके बाद आई को प्रिंट किया, यहाँ पे देखोगे तो उसने ये जो है ना ये लाइन 99 बता, लाइन 99 मतलब क्या, ये लाइन, वो पहले ये एग्जीक्यूट किया, उसने क्या किया, उसने आई को प्रिंट किया, आई को प्रिंट करने के बाद उसने आई तुम्हें वापस दिया। अब ये यहाँ पे जो उसने आई वापस किया है ना, ये आई तुम्हारा ये 103 कंसोल लॉग है ना, ये वाले कंसोल ने इस आई को प्रिंट किया, मैं समझ लो क्या, पहले ये हुआ एग्जीक्यूट, फिर ये हुआ, उसने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद उसने बोला ले भाई पकड़ केक खा, उसने केक दिया और हमारे कंसोल लॉग ने केक लिया और फिर उसको प्रिंट किया। लाइक ये एडिशन है, यहाँ पे एडिशन में वो तुम्हारा वैल्यू रिटर्न हुई है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, मैं क्या एडिशन किया 1,2 किया, तो यहाँ कुछ होगा नहीं, देखो कुछ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिटर्न आई करने के बाद रिटर्न आई हुआ है, आई प्रिंट नहीं होगा। ये जो है यहाँ पे जो अगर देखोगे तुम बोलोगे कि भाई यहाँ पे 102, हाँ 102, देखो यहाँ पे 2 बार 95 का ही लिख के आया है, लेट मी रीलोड इट, नहीं हाँ सॉरी, ये 1 पे ये 3 आया, देखो उसने 95 का, देखो यहाँ 95 में आओगे तुम लोग, तो हाँ ये 95 है, 102 नहीं 102 प्रिंट नहीं करेगा, तो देखो ये 1,2 का आउटपुट यहाँ पे 3 दिया है, उसने ये कंसोल और आई को प्रिंट किया, उसने ये इसको प्रिंट करके इसको निकाल दो ना, मैं इसको निकाल दूँ और उसमें अभी रन करो, देखो तुम्हें 3 कहीं दिखेगा, वो 3 जो तुम्हें दिख रहा था पहला 1.1 + 2 का, वो इस फंक्शन का था। अब तुम्हें बोलेगा कि कंसोल और आई तो कर लिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इसकी वैल्यू आएगी हम इसकी वैल्यू को कोई एक वेरिएबल के नाम स्टोर भी कर सकते हैं। लाइक मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐड इज इक्वल टू एडिशन ऑफ 1,2, आज मैं करूँगा प्रिंट का कंसोल डॉट लॉग ऐड, तो यहाँ पे देखो मुझे प्रिंट करेगा 3, देखिए तो ये क्या हुआ, इसने रिटर्न आई किया, उसने सामान दिया, उसने क्या किया, डेटा, ये डेटा इसको ऐड वेरिएबल था, ऐड वेरिएबल को उसने लिया, ये लो भाई पकड़ सामान पकड़, आई ने ऐड ने सामान ले लिया, कंसोल लॉग ऐड में उसे हमारा ऐड जो था वो प्रिंट हुआ। समझा ना फंक्शन क्या है, समझा फंक्शन, समझा फंक्शन, यस और नो, कोई क्वेश्चन होना चाहिए, एक तो क्वेश्चन होना चाहिए, अगर नहीं है पॉइंट चलेगा, मतलब मेरी टीचिंग लेवल बहुत अच्छी है। और अगर तुम लोग को याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जावास्क्रिप्ट फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग है, फंक्शन बेस्ड, तो फंक्शन बेस्ड मतलब क्या, ये है फंक्शन। अभी फंक्शन बेस्ड में क्या मतलब, तुम फंक्शन के अंदर भी फंक्शन लिख सकते हो। लाइक अगर सी में आई कैस में इतना सी डेवलपर नहीं हो, तो फंक्शन बेस्ड मतलब क्या, तुम लोग है ना फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख सकते हो। लाइक अगर मैं एडिशन किया तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन लिख सकता हूँ, यहाँ पे फंक्शन लिखा सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे लिखा मैंने सब्ट्रैक्शन, वो ए और कॉमा बी को लिया उसने, ठीक है, उसके बाद उसने सब्ट्रैक्शन का फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन, अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, और फिर इस फंक्शन के अंदर फंक्शन लाइक अंदर चलते कंटिन्यू चलते जाएगा, और ऐसा कंटिन्यू चलते ही जाएगा, तो ये है फंक्शन, ठीक है। और अब मैं चाहूँ तो मैं इसको कभी भी कहीं ला सकता हूँ, लाइक मैं इसको ऊपर ला सकता हूँ, मैं इसको नीचे रख सकता हूँ, मैं जहाँ चाहूँ तमाम ला सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये था फंक्शन, फंक्शन इतना ही है और कुछ नहीं है। लेकिन अभी एक और चीज़ है फंक्शन, जावास्क्रिप्ट के अंदर EXIS के वजह से फंक्शन को लिखने के 2 तरीके आ गए। एक तो तुम्हारा ये बाबा आजम में दहाने का तरीका है कि हाँ एडिशन A, B, रिकर्जन, हाँ रिकर्जन ऑल फंक्शन या रिकर्जन सब। सो अब ये तुम्हारा एक तरीका हो गया बाबा आजम का दबाने का कि हाँ फंक्शन लिखो, एडिशन लिखो, पैरामीटर पास करो, फिर रिटर्न करो, ये एक तरीका। EXIS ने बोला है ऐसा एड़े ऐसा, लाइक अगर मुझे फंक्शन लिखना था क्या मुझे बार बार घरे ऐसा फंक्शन लिखना पड़ेगा। EXIS बोला सबन आउट, मैं हूँ, आई एम हियर। तो तीसरा तरीका फंक्शन को डिफाइन करने का क्या है कि तुम फंक्शन को
हैज अ वेरिएबल भी कर सकते डिफाइन, वेरिएबल के अंदर फंक्शन। समझ लो क्या क्या हो सकता है, लाइक कैसा, ये देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ व्हाट लेट्स से यू, ठीक है। अब तुम बोले कि भाई तुम ऑब्वियसली लिखेगा फंक्शन ना, ये नहीं लिखूंगा। अब आती है बात, मालूम है तुम लोगों ने वो ऊपर कहा था ये एरो ऑपरेटर, फॉर ईच में था ये एरो ऑपरेटर। हाँ ये है एरो ऑपरेटर। ये भाई साहब है ना, इसका अलग ही नशा। इस भाई साहब है ना, ये अलग ही गांजा लेके बैठे। ये एरो ऑपरेटर दिखने पे है एकदम छोटा मोटा, पर काम बहुत से बड़े बड़े। ठीक है, अब इसका कैसा काम है, अभी इमेजिन करो, अभी ये यू हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ब्रैकेट पास करूँगा। नॉर्मल ब्रैकेट पास किया, एरो फंक्शन फिर कर्ली ब्रैकेट। अभी तुम बोलेगे भाई फिर ये क्या है, ये मुझको समझ नहीं आ रहा। तो अब देखो इसका नशा एरो ऑपरेटर का। ये तुम्हारा पैरामीटर है, ये और ये डिट्टो सेम है, नहीं सर ये और ये डिट्टो सेम है। ये एरो ऑपरेटर मतलब क्या है, ये एरो ऑपरेटर बोलता है, एरो ऑपरेटर ब्राउजर को बोलते हैं देख भाई ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तुम्हारा फंक्शन है। तो अब मुझे अगर समझ लो, मैं इसको करता हूँ, लेट्स से मैं करता हूँ, इसको करता हूँ डी 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 कंटिन्यू डी डी, ठीक है, तीन डी डी। अब मुझे ऐड करना है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दो पास करूँगा पैरामीटर ए कॉमा बी, पास ए कॉमा बी। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये ऐसा आया कंसोल राइट रिटर्न ए प्लस बी। अब तूने बोले भाई तूने बना तो दिया, उसे बुलाए कैसे हम लोग, तूने बुला तो दिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बुलाना भी तो है, अब बुलाने कैसे, सेम डी 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 डी, क्या मैं एरो ऑपरेटर 1, 2, और इसको मैं क्या करता हूँ, क्या या कंसोल डॉट लॉग। ये देखो 110 में उसे प्रिंट किया। तो लाइक ये है अभी का नया नया जमाने का फंक्शन। एरो ऑपरेटर में ऑब्वियसली भी करता हूँ, ये बहुत टफ कंडीशन है, लाइक ये है ना, ये समझने में इंसान के मेरे को बहुत टाइम लगा था। एडीडी, ये var इक्वल टू एडीडी, ये फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है, फंक्शन का नाम नहीं है, ये वेरिएबल का नाम है। ये अभी जो फंक्शन है, हमने फंक्शन को कहाँ डिफाइन किया है, ये फंक्शन इसको बोलते, देखो ये है ना, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं फंक्शन डिफाइनिंग, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। अगर तुम लोग फर्स्ट ईयर वाले हो, अगर कोई लोग फर्स्ट ईयर में से है, डरो ना का, तुम लोग को आगे पढ़ाया जाएगा कि अगर तुम बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो, तुम लोग बॉम्बे वाले हो, तुम लोग बॉम्बे हटाए कोई भी यूनिवर्सिटी वाले हो, तो तुम लोग को फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में तुम लोग पढ़ा जाएगा क्या होता है फंक्शन, तुम लोग और डीप में ले जाया जाएगा। और इन केस नहीं बता देता हूँ, फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब क्या, कि मैं पहले डिक्लेयर हुआ, पहले मैं JDSC डिक्लेयर हुआ, कि उसके बाद मुझे मेरे काम मिले, मतलब क्या ये फंक्शन ये एडिशन, इसका मतलब क्या, मैं पहले ये डिक्लेरेशन है कि हाँ ये एडिशन का फंक्शन है, ये है फंक्शन डेफिनेशन, मतलब क्या ये इस फंक्शन का काम है। और ये क्या फंक्शन कॉल है, मतलब क्या फंक्शन को बुलाने के, ए भाई आप काम कर, समझे मतलब क्या। तो ये यहाँ पर जो है हम लोग वेरिएबल के अंदर हम लोग डायरेक्टली फंक्शन को डिफाइन नहीं कर रहे। यहाँ पर कैसे डिक्लेयर करो, डिफाइन करो, है ना, इसका डायरेक्ट डिफाइन किया हमने बोला भाई ये ले और डायरेक्ट ऐड करके बुला। और अब मैं तुम लोग बोल रहे हो कि भाई दोनों का, और सेकंड थिंग, दोनों का परफॉर्मेंस सब सेम है, दोनों का परफॉर्मेंस सब कुछ सेम है। तुम लोग बोल रहे हो कि भाई अगर दोनों का परफॉर्मेंस सब कुछ सेम है, दोनों के अंदर कोड का लाइन भी सेम ही है, लाइक अगर मैं चाहूँ ना, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे ऐसा A+B कर सकता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं बोल रहे कि भाई कोड का लाइन भी सेम है। और एक मिनट, सॉरी अंदर की आवाज आएगी, रियली सॉरी, आवाज के अंदर बहुत आती है, मैं सब माइक में तो म्यूट हो रहा हूँ। Yes, hello everyone. Hamza Khalid Beg here. So in the meantime, let us do a thing. Let us just ask you all a few easy questions, and let us see how many of you can reply. You can easily reply if you want in the chat box, or you can also unmute your mic. So let us see.
Uh, can you answer what is a variable? Like, what did you learn about variables? I guess I can just see one answer from Javed Khan. Any other people? Can any other people also reply? Like, what is a variable? We can say that variable is like a box which stores value or information. Yes, that was a very good answer. Okay, so the next question is, if you want to store many variables, like you want to store like multiple values, so how do you do that? We can use list. Yeah, so that was the answer. I guess you have learned what an array is. Okay, so let us say you have many, you can say, values in an array, and I want to access, let us say, the 10th value, like starting from element number 1. Let us say I want to access the 10th element. So how List do I? bracket 9. Okay, so can anyone just explain why do we not do a10, and why do we do it Because the numbering starts with 0 and Because the thus array the starts 10th value with is on 9 number. zero, starting with zero, index number. So I guess we have two genius people over here. I'm looking forward for answers from everyone. You can also type those in your chat box. Okay. Okay, so can anyone explain like where do you use a for loop and what's the syntax of for loop? Like anyone, you can type For those in the chat box. repetition. For what? For repetition. Yes. Okay, so can anyone just tell me the syntax of a for loop? Like say I want to print For numbers 1 to 10. initialization, condition, and then increment or decrement. Okay, thank you. That is the answer. Okay, so let us say I want to print the numbers from 1 to 10. So what will I put in the place of the initialization condition, and then the I equal to 1 condition will be I less than equal to 10, and there will be increment I I plus plus plus. plus. and what will be inside the for loop? Console.log I. But it Yes, will skip the right. first element because you are selecting from I equals to 1. No, it will print the first element. Then it increments. Yes, yes. Okay, so can anyone other than you two tell me like why functions are used? Like what did you get, or what did you understand by the word function? Like what is a function? Or anyone else, you can also type your answers in the chat box, no matter I mean, even if you copy it from Google and type it, there's no problem. At least you can read that definition once again. Yes, we can call it many times. So there's an answer to carry out a specific task. Yes, so basically that's the correct answer. Well, functions are basically blocks of code that you use to, perform a specific task. Like in this case, if you see function addition, we have used this function to, take two parameters that are a and b. Parameters are nothing but, inputs that you will give to a function. So you are giving a and b, and then this function, it adds them and returns a plus b. So I mean, that's the work of this function. Okay, so I guess
Zaki, you can continue. Yeah, I'm really sorry. Like my house is like I'm really sorry. My house is like kind of beside the mosque. So whenever there's azan, so it's like speaker are faced toward my room only. So that's why whenever it is azan going on, I used to mute my mic. I'm really sorry and thank you, Hamza. It's really great test. So yeah, so now you guys have learned all the basic things that you need to learn about functions and that yeah. So tomorrow we will continue with class. But now what we are going to do? Now I will tell you that how does the JavaScript help our HTML. Like there's many things I want to teach you, but we have like you all guys told that you need to complete it before 6. So now what I'm going to do is that I'm going to teach you how you can like there's many things like class, there's many class and try catch it, and then I want to go in deep of this arrow function, but I will cover this tomorrow. Now let's see how does this JavaScript help this man, our HTML. Okay. So coming back now, what I'm going to do? No, no, इसका हमें ज़रूरत नहीं है. Let's make it more compact. New. Okay. So you guys know that yesterday Hamza taught you about ID and class. Remember ID and class? Who remember ID and class? Who remember? Yeah, he told you the attribute ID and attribute class. Who remember ID? Yes or no? You can type yes if you remember. Yeah, you can type remember yes. And meeting two guys, you also can type yes. I can see there is only one Sayed Haran Sep. Sayed Haran Sep, you can just join the other meet. You can join the other meet. The, it's kind of empty. You can join over there. But if you're comfortable here, you can be here. If you're comfortable, or up to you. Okay. So now ID in Java. Okay. So when now let's me just make it half. Okay. Let me make it half. मुझे अभी हमें तीनों चीज चाहिए. Now you guys might be seeing that who's ज़्यादा compact है. Yeah, it is compact. That's why we programmer use second screen. Like in our real life, this our web page is used to open on our second screen, and over here we have our index, and over here JavaScript. But since we can only share one screen at a time, I can't help, but you have to manage this. Okay. So now what if I tell that I have an idea. Let's create another file. Let's create HTML HTML.js file. ठीक है HTML.js file. ठीक है. Now to link this HTML underscore JS file, what we need to do? What need we to do? Like if I want to link this file with our HTML, what should I write? You can type in the chat box, or you can just open your mic. If I want to link this HTML underscore JS file with my index HTML, what should I do? Yep. Yeah. Javed, you are correct. What I need to do? I need to just close this. I need to again add script tag. I need to again add script tag, and under src, I need to write what? HTML underscore JS dot JS file, and then close it. Okay, so now what happened? Now that this file, this HTML underscore dot JS file is now linked with my index or HTML. Okay, so let me drag it down over here. No. So hello everyone. I'm back. Hamza back here. I'm back. It's done? I'm sorry. Yeah, Oh, yeah, okay. it is done. Yeah. Sometimes I'm really irritated. So okay. So if I want to, now, yeah. So now what if I want this hello world? This hello world is over here, na? Now what if I want this hello world to be printed inside my console.log? So for that, what we need to do, we need to use ID. Okay, we need to use ID. Now I will tell you guys in a minute what is ID and what, like I will tell you the real use of ID and all. Okay, so in short, agar for those who didn't understand what ID is nothing but Aadhaar card of every element. Like it's unique, and everyone have their own Aadhaar card with them, like own unique Aadhaar card. So ID is nothing but Aadhaar card.
Okay, so now let me give me ID of h1, and you can give anything inside the ID. So now what if now to access this h1, okay, to access this h1, what I need to write is there is a method called get element by id. So yeah, and one thing I didn't thought you here, but okay. So let me just before going, just before going in deep, what is get attributed? There is something called object. Every data type is object, like your integer, your string, your array, your boolean, everything is object. And what is object, I will cover it tomorrow. Like, since we don't have time today, I will cover it tomorrow. So here, as you can see in our index.js, as I told you that our array or list, like both the same thing, or let's say list. Our list is also an object. Our list data type, our list is also a data type. A list is a data type that is a collection of data type. If you go in deep, the real definition is list is a data type, but it's a collection of more data type. So as you can see, ls. So ls have a data type, and then you guys might be thinking then what is dot length. So dot length is nothing but it is a function of that class. It's a method. So the other word for function is method. Like whenever the function is inside, whenever the function is inside a class, then it is called method. Like उसे बोलते हैं method पर लिखते function ही है. So this length is a method that doesn't take any parameter. Okay, yes, for parameter नहीं, it doesn't take any parameter. That's why it is like that. So similarly, even for our JavaScript, this whole HTML is an object. And what's the name of the object? The name of the object is document. You cannot change it. तुम कुछ नहीं कर सकते. वो जो है सो है. जो दिखा है उसे कंज्यूम करो. Like जो दिखा है उसे मान लो बिना सोचे समझे. So for if I want to assess this hello world, और लेट्स सी इफ आई वांट टू एक्सेस दिस h1 ना, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ये मैं h1 जावास्क्रिप्ट में लूं, सो मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट, देखो मैं डिस्प्ले का डॉक्यूमेंट आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट बाय आईडी. गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या? जो नाम है वो ये गेट एलिमेंट. ये सब एलिमेंट है, योर h1, योर स्क्रिप्ट, योर बॉडी, योर html, this all are element. But what? Get the element by the id. So what we need to do? Obviously we need to pass the id. So id कैसे पास करते हैं? id पास करने के लिए ब्रैकेट एंड inside and then quote, and then what is the id of h1? The id of this h1 is h1. Like for example, let's remove h1. It's kind of, let's say hello. इसकी id hello है. Okay, let's say the id of my h1 is hello. So now if I want to access this h1, what I will write inside of id? I will write hello. I will just copy it. I will paste it. Okay, and then let's give it to a variable. Let's say a is equal to, and then now let's print it. Let's print this bad boy. So log a, and for time being I will just comment it. And if for those who don't know, to comment any line, just press control plus forward slash. Hamza told it yesterday, but those who are like coming first time in day 2, control plus forward slash, so that will comment it. Okay, so now let's restart it, and you can see I'm getting my h1 id. यहाँ देखो, यहाँ तुम देखोगे, like अगर दिख रहा होगा तुम लोग को, so you can see I'm getting my h1. So this is how our JavaScript assess the element. So for example, अगर मैं यहाँ दूसरा भी ले लूँ, जैसे मैं h1 लिया, पर इसका मैंने id दिया hello world, मैं दे दिया hello moto. Now tell me guys, if I want to access this h1, what should I pass inside my get element? What get element, what id should I pass? Hello one. Hello 1. Right. Now if I write hello 1, then it will give me and rename. Then see it's giving me hello motor. Now let's say I don't want this. I don't want to get this whole element. I just want the data of the hello world. I just want the data. So how you assess it? So remember what Hamza told yesterday. These are tag, and what is this? This is contain. This is called as contain, right? So now if I want to assess the content of h1, obviously what I need to write? I need to write dot and then dot contain. Okay, dot contain. It's giving me undefined or containing dot values. Okay. No, sometimes I also forget that car will just write element.
हाँ, डॉट कंटेन्स, डॉट कंटेन्स और कंटेन एयरपोर्ट क्या बताया एक मिनट मैंने तो आगे चेक चल जाता है क्या। हाँ हाँ हाँ, ये कैसे लिया। So it's called inner HTML. Inner HTML. I'm really sorry. Inner HTML. So inner HTML में दिया hello mode. अभी inner HTML का मतलब क्या होता है ना? Inner HTML का मतलब ये होता है, now let's say अभी since यहाँ पे तुम देखोगे कि H1 के ना बस एक ही content like H1 doesn't contain any nested tag. So what if मैं इसको हटाया, यहाँ पे मैंने enter मारा और मैंने लिखा H2 और H2 के अंदर मैंने लिखा hello. So what will output will be the same with your output will be I will remove one. So now it's giving me nothing. ये खाली है। खाली क्यों? क्योंकि ये H1 के अंदर ये H2 है। Now अभी सीन अगर मुझे ये वाला H2 को डिफाइन करना है, ठीक है, अगर मुझे ये वाला H2 को डिफाइन करना है तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे भी आईडी पास करनी पड़ेगी। मैं आईडी पास किया, मिल गया, यहाँ पे लिखा मैंने हेलो और फिर यहाँ पे मुझे इसका एक एल हटाता हूँ, मैंने हटाया, रीडन किया, अब देखो हेलो आया, समझे। लेकिन ये जो यहाँ पे है ना कुछ दिखा रहा है ये, let me refresh this shit. हाँ, so यहाँ देखो उसने hello print किया, ठीक है। So this is how it works. और and then it has many things, like there is one more thing that is called get element by document dot get element by class name. What class name is, याद है कल से कहा था class. So now what if I write it over here class, ठीक है, मैंने class लिखा, ठीक है। So let me just print it down and यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं S and यहाँ पे मैं L पास है, ठीक है। So now what if मैंने बोला कि यार मेरा आईडी लिखने का मन नहीं कर रहा, मैं क्लास से बुलाता हूँ। So क्लास से बुलाने का तो उसके लिए एलिमेंट क्या है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। और क्लास नेम फिर मुझे यहाँ पास करना है, यहाँ पे क्लास नेम नाम है, क्लास नेम नाम है हेलो। यहाँ पे क्या करूँ, मैं पास करूँगा हेलो, पास किया, फिर मैंने हेलो पास किया और फिर मुझे कैसे चाहिए डॉट इनर एचटीएमएल और फिर यहाँ मैं बी पेस्ट करूँगा। तो बी में डल दिखा रहा, क्यों? अब अनडिफाइंड बता रही है। अनडिफाइंड इसलिए बता रहा है क्योंकि लेट मी सी क्योंकि गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम के ना इनर एचटीएमएल नहीं होता, उसका है इनर देखो कैश का पकड़ा तो ना, हाँ उसमें देखो यहाँ HTML कलेक्शन आया, ये HTML कलेक्शन है और यहाँ पे वो बता रहा है कि 0h2 कहना नॉट हेलो है। तो अगर मुझे कहना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, डॉट h2 आई गेस डॉट वैल्यूज, ठीक है। सो डॉट इनर HTML शायद नहीं बताएगा इसमें जल्दी, यूजुअली क्या है ना, मुझे इससे याद नहीं आ रहा क्योंकि गेट एलिमेंट में क्लास से कोई यूज नहीं करता, लाइक गेट एलिमेंट में क्लास से काइंड ऑफ लाइक आउटडेटेड है, वो आउटडेटेड वर्जन है और कोई भी बंदा है ना गेट एलिमेंट में क्लास को नहीं करता यूज, लाइक लिटरली कौन सा गेट एलिमेंट बाय एचटीएमएल में कुछ नहीं है, गेट एलिमेंट बाय एचटीएमएल में कुछ नहीं है, इट्स जस्ट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम के लिए हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कि कौन से एलिमेंट है जिनके पास सेम क्लास नेम है। लाइक फॉर एग्जांपल चलो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो मैंने 3 से 4 लिखा, अब मुझे ढूंढने का है कि भाई कितने ऐसे एलिमेंट है जिनके पास क्लास नेम हेलो है। तो मैं क्या करूँगा, डॉट लेंथ और लेंथ में प्रिंट करूँगा। सो यहाँ पे देखो उसे 4 बता दो। यूजुअली गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम यूज होता है ये काउंट करने के लिए कि कौन से एलिमेंट, लाइक क्लास नेम बोलो ना नॉर्मली, अगर तुम मुझे बोलोगे Zaki, tell me why you use get element by class name. So I use get element by class name just for debugging purpose, only for debugging purpose. The class get element by class name कोई यूज नहीं करता, always use get element by ID। ये सिंस कुछ कन्वेंशन है, कन्वेंशन को फॉलो करो, ठीक है, ओके। एनी क्वेश्चन कि get element by ID और get element by class क्या होता है? समझा तुमने, नो डाउट। अभी तुम लोग बोल रहे हो कि ज़की यार इनर एचटीएमएल का और काम क्या है? इनर एचटीएमएल का बहुत काम है। उसका द फर्स्ट वर्क और द फर्स्ट फंक्शन ऑफ इनर एचटीएमएल इज दैट इट गिव्स यू द डेटा कि जो भी उसके अंदर रहेगा ना, जो भी एलिमेंट के अंदर रहेगा वो एलिमेंट उठा के तुम्हें देगा। एंड सेकंड जॉब इज क्या, यू कैन एडिट द एलिमेंट कंटेंट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट।
अब कैसे, ये देखो, ये कमाल देखो कैसे होता है। अगर मैं इसे कॉपी किया यहाँ पे मैंने, हाँ पेस्ट किया, मैं नहीं चाहता कि यार ये जो एलिमेंट का आईडी हेलो है, उसका उसका मैं चाहता हूँ कि ये गाज से हटा के मैं करूँ हेलो जकी। कैसे करूँगा, इक्वल टू साइन डालूंगा कोड और यहाँ पे लिखूंगा क्या, हेलो जकी, हेलो साइड, हेलो साइड। तो ये रन हुआ, बी इज नॉट डिफाइंड। अरे ये देखो वैल्यू चेंज हो गई। अब जैसे यहाँ पे मैं जस्ट को लेट मी आधा आधा ताकि पूरा दिखे। हाँ, अभी जैसे ही मैं इसको यहाँ चेंज करूँगा, हेलो से मैंने चेंज किया हेलो वन, हेलो वन चेंज हुआ। लाइक क्या आ गया, उससे पहले इसको एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद चेंज किया। मैं यहाँ मैं जो लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिया। देखा कैसा एलिमेंट का वैल्यू चेंज करें हम लोग। अब मैं चाहूँ तो मैं क्लास नेम की वैल्यू नहीं चेंज कर सकता। नो नो एचटीएमएल की क्लास नेम की वैल्यू आई थिंक वी कांट चेंज, क्योंकि क्लास नेम का ना आउटडेटेड है। क्लास नेम आउटडेटेड है। अगर तुम ये सोचोगे कोई एक्सेस ऐड करोगे जो चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ का अभी का लाइक अभी के बहुत से सपोर्ट करते ही नहीं करते, तो तुम बोलेगा क्लास नेम एलिमेंट का क्लास नेम ऐसा क्रॉस ना है वो, लेकिन अलाउड नहीं है। तो ये है, तो समझा कैसे कैसे मैंने वैल्यू चेंज किया। लाइक इनर एचटीएमएल से यू कैन using inner HTML say you can get the content of that HTML and also you can change the value of that element। ठीक है, सर 528 हो गया। अभी एक लास्ट चीज करता हूँ। सो नाउ लेट्स वर्क विथ फॉर्म। सो आपको याद है ना कि हमजा ने कहा था लास्ट टाइम कि फॉर्म जो है जावास्क्रिप्ट के लिए काम आता है। सो नाउ फॉर्म लास्ट थिंग, उसके बाद मैं कल कंटिन्यू करूँगा बाकी का। लाइक बहुत काम, बहुत इसमें मैंने बता के थक जाऊँगा तुम्हें, इतना इसके अंदर है। ठीक है, सो लेट्स से मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे इनपुट लिया टाइप टैक्स का नेम रखता हूँ मैं एफ नेम, आईडी पे रखता हूँ मैं एफ नेम। लेट मी कॉपी इट और रखता हूँ आई नेम या एल नेम, लास्ट में कॉपी किया उसको आया। और ये सब टाइप मैंने रखा बटन, ठीक है, टैग रखा मैंने बटन, आईडी में रखा सबमिट। अभी मैं ज़्यादा डीपी पे नहीं जा रहा हूँ। ज़्यादा डीपी में ना ज़्यादा बहुत आप होते हैं, आप ज़्यादा सी ऐसे लेवल पे मैं डाल रहा नहीं हूँ। जस्ट समझ लो वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, और कल हमजा ने तुम लोग को एक एट्रीब्यूट बताने, एट्रीब्यूट का नाम है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है बताता हूँ, तुम खुद देख लो प्लेस होल्डर क्या करता है। देखिए प्लेस होल्डर जो है वो लेबल बता देगी ये फर्स्ट नेम है कि ये फॉर्म है, ये किस चीज़ का है। इंस्टेड तुम लेबल डालो, यू कैन डायरेक्टली पुट प्लेस होल्डर। ठीक है, लेकिन लेबल डालो ठीक है लास्ट में। ठीक है, सो अभी मैं सबको डिलीट करता हूँ। तो एरर देगा। अभी क्या देगा, अब समझो यहाँ यूजर ने डेटा डाला, यहाँ पे डेटा डाला, अब सबमिट किया। सबमिट किया में तुमने देखा कि कुछ हुआ नहीं। ठीक है, लेट्स से इंस्पेक्ट करो, कुछ हुआ नहीं। अब मैं चाहता हूँ जैसे बना सबमिट में क्लिक करे, जैसे सबमिट में क्लिक करे, मुझे जो बंदे के एफ नेम की और लास्ट नेम की जो वैल्यू है मुझे आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, उसके लिए क्या होता है, हम लोग पहले क्या करते हैं, लेट्स से ये हम लोग फंक्शन बनाए। ठीक है, हम लोग फंक्शन बनाया। हम फंक्शन का कहना क्या लेते हैं, हम लोग फंक्शन का एफ नेम लेते हैं और फंक्शन का हम लोग लेते हैं एल नेम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखने का तरीके बहुत सारे। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट ऐसा है, फर्स्ट नेम फिर डबल सेमी कोलन फिर उसके बाद जो बंदा यूजर डाले वो। तो अगर मुझे वो कहने क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कोड डालो। यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैं करूँगा यहाँ पे सेमी कोलन डाला, फिर कॉमा मारने के बाद एफ नेम। ठीक है, सो सेम मैं करूँगा, यहाँ पे मैं लाया एल नेम, उसका मैंने किया लास्ट नेम। ठीक है, तो अभी लाइक जस्ट फॉर फंक्शन में नाम देना भूल गया, तो ये बहुत कहाँ बनाने का तरीका, लेट मी कॉन्स्ट सब इक्वल टू। और किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि एरो फंक्शन यूज क्यों करते हैं, एरो फंक्शन का लाइक अगर मैं जाऊँ ऊपर तो यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मैं जाऊँ जहाँ भूल गया था। हाँ,
व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस ओल्ड मेथड? बेनिफिट ऑफ दिस ओल्ड मेथड ये है कि फंक्शन गायब हो गया वाला। अगर तुम लोग रिएक्ट करोगे, एक्सप्रेस करोगे, व्यू करोगे, तो वहाँ पे तुम लोग को एरर फंक्शन नहीं रहेगा, कोई भी फंक्शन नहीं करता। या फिर अगर तुम लोग कोई भी जावास्क्रिप्ट का बाहर के ट्यूटोरियल देखोगे ना, अगर तुम इमेजिन करो तुम यहाँ पे सीखे बोले चलो करते रिएक्ट करते हो, तुम रिएक्ट करने गए जो तुम कर सकते हो ये बक्सा के बाद, तो हम देखो वहाँ पे कोई भी ऐसा फंक्शन लिखते नहीं बैठेगा, डायरेक्टली होता है एरो फंक्शन। तो ना बोले कि अरे क्या है एरो फंक्शन? एरो फंक्शन बहुत वास्ट है। ठीक है, तो अगर मैं आया, मेरा फंक्शन बनाया, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल किया तो देखो कैसा है आउटपुट का। सब मैं पास किया मैंने तकी और खान। तो ये देखो यहाँ पे उसने किया एफ ने ये अच्छा। तो तुम्हारा देखो कि उससे देखो डायरेक्टली ना एफ ने मुझसे पकड़ लिया मेरे जावास्क्रिप्ट में, खुद ने एफ ने ले लिया। तो ये देखो यहाँ फर्स्ट नेम आया जैकी, लास्ट नेम आया खान। ठीक है, सो अगर मैं अभी सिंस मैं ऑफिस से करता हूँ उसको मैं कंट्रोल भी मारता हूँ। ये कैसे क्या मैंने तुम बोले कि यहाँ पे चेंज दो, ये जो ये है इस पे क्लिक करो, कंट्रोल डी दबाओगे तो यहाँ पे भी आएगा नीचे, कंट्रोल डी दबाया यहाँ पर नीचे, अभी एक और डी दबाओ, हटाया इसको मैंने और एल ने। ठीक है, तो ये आ गया। उसको मैं करता हूँ रीलोड, इसको मैं करके यहाँ पे जैसे कि मैंने रीलोड किया, अब देखो क्या होता है। तो अभी तुम्हें मालूम है एक्शन क्या था? एक्शन मतलब बोलता है कि ऑन सबमिट करने में क्या, ऑन सबमिट करने में क्या आता हूँ बताता हूँ। सब है, सब फॉलो फंक्शन है मेरा, ये सब वाला फंक्शन जो है कैसे करते हैं कि एरो फंक्शन डाला एक्शन में, ये एक्शन खत्म हो चुका। ठीक है, फॉर्म में डाला। ठीक है, तो अभी जब भी बंदा है बटन में क्लिक क्या हुआ इसको, तो मैं चाहता हूँ जब भी बंदा क्लिक करे, जैसे बंदा ये इनपुट पे क्लिक करे, मैं चाहता हूँ कि इन दो की वैल्यू जो है ये मैं लूँ और मैं प्रिंट करूँ। तो पहले क्या करता हूँ, लेट्स से हम लोग इन दोनों को ले लेते हैं, हम लोग लाइक हम इन दोनों का वैल्यू ले लेते हैं। सो कैसा कहते हैं ना, लेट्स से पहले बटन होता है, मैं क्या btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी is सबमिट। ठीक है, और यहाँ पे है ऑन क्लिक। देखो यहाँ जैसे मैं ऑन किया तो ऑन अबोर्ड, ऑन एनिमेशन कैंसिल, कितने सारे काम मुझे हम लाइक ये सब क्या है ना, ये सब एक्शन क्या देखिए। बटन में मैं क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, बटन को मैं अगर बटन ब्लर हुआ तो क्या होगा, लाइक बहुत सारे कि अगर बटन की वैल्यू चेंज हुई, लाइक ऑन चेंज होता है यूजुअली, ऑन चेंज होता है ये इनपुट कैसे लेके, जब उसकी वैल्यू चेंज हो तो क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे हमें यहाँ पे कहते हैं ऑन क्लिक, जब बंदा क्लिक करे तो क्या हो। तो ऑन क्लिक करने के बाद ये आया 12 महीने, और यहाँ पे एरो फंक्शन एंड देन लिया। अभी सब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एफ नेम, लेट्स से एफ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, आईडी नाम की इसकी आईडी है एफ नेम। ठीक है, उसकी सेकंड किसी वैल्यू चाहिए, वैल्यू इसकी डॉट इनर वैल्यू होगा डॉट वैल्यू और सेम मैं करता हूँ एल, यहाँ पे करता हूँ एल। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये एग्जीक्यूट हो गया फंक्शन, तो सब एफ कॉमा एल। ठीक है, ऐसे ही चलता है। इसलिए मैंने कोड लिखा नहीं ना, कोड यहीं पे लिख रहा हूँ और सबमिट। अरे दूसरा
आई एम रियली सॉरी गाइस। मेरे यहाँ गलती से ना बाजू में दूसरा सबमिट हुआ था, मैं वो सबमिट लेके खड़ा था। सुनो सुनो, जो मैं सिखाया सब कुछ नाम में से एक छोड़ो, सब गलत था, रियली सॉरी। तो एक्शन ये रहता है ऑन सबमिट में चाहता हूँ कि मेरा ऑन सबमिट सब आना चाहिए। फिर सब मैं लिखता हूँ। उसके बाद ठीक है, अभी फॉर्म पर बुलेटिन नहीं था, तो हम उसके लिए फॉर्म को भी एक नाम में देना पड़ता है। वो फॉर्म को नहीं देना पड़ता है, फॉर्म को लिख दिया, जैसे फॉर्म लिख दिया, इसको ऐसे फॉर्म टाइम सारे हो गए ना। मैं आई विल जस्ट टेक 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट जस्ट वेट विद मी। जो अटेंडेंस लिंक मिल गई होगी ना, अटेंडेंस लिंक वॉइस ब्रेक हो रहा है। टीम होस्ट लिंक दे दिया। अटेंडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी, डाल दिया। आ जाएगी इस सेशन के बाद में। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मुझे है ना, ये अब देखो, अगर मुझे फॉर्म का एक्सेस करना होता है ना, तो उसके लिए हमें ना फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ता है। अभी सर हम बोलोगे जल्दी जल्दी कैसे करना है, तो ये यूजली इसलिए ना मैं हूँ तो बैंकों के अंदर सब कुछ इंप्लीमेंट होता है। तो आज छुट्टी लेंगे, मैं हम डेमो डालता हूँ, डेमो के अंदर सब चीज़। Okay, your voice is lagging. Screen and camera both are freezed. So hello everyone, Hamza here. As I can see, some of the messages, many of you are saying, to continue in the next session. And believe me, I am a student as well, and I know how difficult it is for you, to sit for 2.5 hours at once. Even it is, even it is difficult for me to teach in 2 hours. Like you can see, I'm forgetting code. Like मैंने ना कोड लिख के रखा है, लाइक जो भी कोड है मेरा, ये मैं बैठा हूँ, ये बैठ के लिखा, जो कोड भी याद नहीं है, लाइक 2 घंटे के बाद दिमाग में तो एग्जॉस्ट हो रहा है। तो जस्ट बेयर विद मी, आज कम ही पढ़ाऊंगा। अभी मैं ना कोड जाऊंगा, कोड थोड़ा रिवाइज करूंगा। अभी मैं जस्ट तुम लोग ये सिखा रहा हूँ कि जो मेन चीज़ है, जो आज का हमारा क्राइटेरिया आता है कि फॉर्म से कैसे लेते हैं इनपुट, क्योंकि तुम लोग का आज का टास्क देगा, इट विल बी बेस्ड ऑन द फॉर्म एंड अदर थिंग दैट आई हैव थॉट यू टुडे। ठीक है, दिस फॉर्म इज लास्ट थिंग, जस्ट बेयर विद मी एंड लेट मी आल्सो क्लियर। ओके, सो या किस स्क्रीन में है यार?
Yes. So if you want to assess the input of the form, so first of all you need to give the name of the form. You need to give the form, and also you need to. This is on submit. It is an attribute. It is it जो नाम है वही काम है. On submit means whenever the user clicks the submit button, this function should work. Like this sub function should work, and this sub function would be written in your JavaScript. Okay. This function will return in your JavaScript. So now I don't need to pass any kind of parameter over here. That's normal. So if I want to access the data, so if I want to access this input tag, so what I need to write, I need to write document.form and then the name of the form. So what is the name of the form? The name of the form is form. So I will write form and then again bracket, and then I need to write the name of the input tag. Like here the name of this input tag is f name and the name of the input tag is l name. So if I want to get the value of the f name, I need to write here over f name. Okay, and now if I just console or log it, if I console or log f name, okay, and then submit it, and let me write something with the form and submit. So you can see nothing is happening. Why? Because this give you nothing. Like ये तुम्हें कुछ भी value ये चीज़ है ना तुम्हें कुछ भी value return नहीं करती है. So if you want the value of that, you need to write dot value. Okay, now and submit. Oh, हाँ मैंने टाइप दिया नेम देना भूल गया. लिंक तो है ना लिंक है. I don't know if this code is not working. Hello, Zaki. Hello guys, since my internet, I'm getting real issue from internet. So okay, so we will continue this tomorrow. My internet has been over. My so this is was all for today. Tomorrow we will continue from JavaScript again. So like first I will teach you JavaScript and then Farhan will come and teach you about the portfolio. So yeah, so to your so just leave the form. Just leave the form. I don't know why it's not working. Everything is working correct. Actually, it's not working. So that it's for today. If you have any question, if you have any question regarding this one, okay, this one, any question regarding this thing, you can ask me now. Like function, you have anything about function, about function, attendance link. Attendance link. I think my team told me that they have shared the attendance link in the chat channel. Once the Oh, lecture is over,
we are once the going lecture is to over, we will send you the attendance link. And yeah, most of you guys, I get to know most of you guys were having issue for doing RSVP, na. So it's like we will send you a link. We will send you a YouTube link where you will be taught how to do RSVP, because it's हमें सोचा था कि हम Google फॉर्म यूज करेंगे, but it's rule for Google Developer Student Club. We can't use that, यार. कुछ रूल्स है वो फॉलो करना पड़ता है, और else our JDSC would be in fear, like कहाँ वो उसका टेंशन में आ जाएगी फिर JDSC में. So we need to use that form only for taking attendance. Like it's mainly RSVP link, like RSVP link है वो. If there are no doubts, we can just wind up now. I think, yeah. Thank you. Thank you, Siddiqui Mohammed. Thank you, Iman. Thank you, everybody, for bearing me 2 hours. And yeah, really sorry for that, all the error that was held in between. 2 घंटे पर मेरा भी दिमाग ऑफ हो जाता है, मुझे भी कोड याद नहीं आता. Thank you, Chinmay. no matter how experienced you are always gonna get errors. Error आते ही है. That's why there is one huge community that's called Stack Overflow.